At the outset, let me thank everybody who's made it a point to come despite the COVID circumstances and the challenges of traveling so far on a Sunday morning. So a big thank you to everybody. As is routine for all Apex Foundation meetings, we'll start with the national anthem. So please rise for the national anthem. यह सिर्फ एक धुन नहीं, पूरा हिंदुस्तान है। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल वंग विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे। गाहे तब जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय है, जय है, जय है, जय 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 हे। Thank you all. In the last 2 years, we've all seen how this pandemic has affected all of us. ये महामारी में जो हम सब ने challenges face की हैं, इसके साथ साथ किडनी पेशेंट्स को खास करके कोविड के समय में बहुत सारी दिक्कतें आई हैं। और जब भी ये दिक्कतें आती हैं, तभी एज ए ह्यूमन रेस हम सबको साथ में खड़े रह करके उसके साथ जूझने के सिवाय और कोई चॉइस नहीं होता। इस कोविड के समय में हमने हमारे कुछ किडनी वॉरियर्स को खो दिया और शुरुआत में जब मार्च 2020 में कोविड का आगमन इंडिया में हुआ, तब से शुरुआत के 3 महीने में हमने देखा कि ऐसा कुछ करें जिससे हमारे किडनी पेशेंट्स को हम सेफ रख सकें। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे डॉक्टर बिल्ला, उनको मैं इनवाइट करूंगा। उसके साथ ये बताना चाहूंगा कि एपेक्स किडनी फाउंडेशन ये 2008 में हम 4 नेफ्रोलॉजिस्ट ने साथ मिलकर के ये फाउंडेशन बनाने की एक पहल की और हमारे सपोर्ट के लिए हमारे पास 2 फिलैंथ्रोपिस्ट जो बिजनेसमैन हैं, पर उनके मन में ये भावना थी कि ये फाउंडेशन को फाइनेंशियली जो भी सपोर्ट लगे। और शुरुआत के दौर में जब ये कोई भी फाउंडेशन अपन शुरू करते हैं तो उसके लिए कुछ फाइनेंसेस की जरूरत पड़ती है। तो ये 2 फिलैंथ्रोपिस्ट ने आगे आकर के हमारा हाथ थामा और हमें कहा कि आप जो भी अच्छा काम करना चाहते हैं आप जरूर करिए और इसमें हम आपका सपोर्ट करेंगे। और भगवान की दया से, जैसे मैंने हमने इनविटेशन कार्ड में भी लिखा था कि भगवान की दया से और सारे डोनर्स के सपोर्ट से हम आखिरी 10 से 12 सालों में करीब 20 करोड़ का सपोर्ट किडनी पेशेंट्स को दे चुके हैं। आप सोचेंगे कि ये 20 करोड़ तो रीजनेबल अमाउंट नहीं है, इससे ज्यादा काफी करने की जरूरत है। एंड एज वी से इन इंग्लिश, दिस इज ओनली द टिप ऑफ द आइसबर्ग। अगर हम किडनी पेशेंट्स की मात्रा देखें तो सारे देश में, सारे वर्ल्ड में इसकी मात्रा दिन बे दिन बढ़ते जा रही है। और इसके साथ डायलिसिस पेशेंट्स, जिसको डायलिसिस की जरूरत पड़ती है, उसकी मात्रा भी बहुत बढ़ रही है। खाली फाउंडेशन के सपोर्ट से ये सब हासिल करना, ज्यादा लोगों को हेल्प करना, ये संभव नहीं था। इसलिए साइमल्टेनियसली हमने एक सोशल एंटरप्राइज, जो आप सब शायद जानते हैं, एपेक्स किडनी केयर, ये एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हमने शुरू की
जिससे हम जरूरतमंद लोगों को जिनको डायलिसिस की जरूरत है उनको अच्छा क्वालिटी ट्रीटमेंट दे सके एट एन अफोर्डेबल रेट। बाहर के देशों में डायलिसिस का कॉस्ट करीब 30 से 35 हजार रुपए है। हर डायलिसिस का कॉस्ट करीब 30 से 35 हजार रुपए है। और इंडिया में अगर हमको 1000 या 1500 रुपए में वो डायलिसिस करना है तो उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं और काफी पेशेंट्स ये भी अफोर्ड नहीं कर सकते जो नॉर्मल डायलिसिस का चार्ज है एपेक्स सेंटर्स में। और इसलिए फाउंडेशन के सपोर्ट से हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को हेल्प कर सके हैं और उम्मीद है कि अगले 10 सालों में या 15 सालों में हम और भी बहुत एरियाज में जहां पे जरूरत है वो काम कर सकें। जैसे प्रिवेंशन, आप सबने सुना है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हर पेशेंट को इलाज देना, अपने जैसे देश में जहां 140 करोड़ लोग हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों को किडनी की बीमारी है, इन सब का ट्रीटमेंट करने के लिए तो हमारे लिए संभव ही नहीं है। इसीलिए प्रिवेंशन पे काम करना, एजुकेशन पे काम करना और यही सभी माध्यम से हम किडनी पेशेंट्स को जितना हेल्प कर सके उतनी हमारी कोशिश है। बस इतना ही कहकर के आज ये स्पेशल फंक्शन हमारे किडनी वॉरियर्स के लिए हमने अरेंज किया है और कोविड के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से हम सब वॉरियर्स को इनवाइट नहीं कर सके हैं, पर काफी लोग हमारे साथ जूम कॉल पे भी जुड़े हुए हैं और उन सब का इनपुट, उन सब की कमेंट्स भी हम जरूर ये प्रोग्राम के दौरान आपको सबको पहुंचाएंगे। कुछ वॉरियर्स को जिसको हम फेलिसिटेट आज कर रहे हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस कुछ शेयर करेंगे और कुछ लोगों ने हमको प्री एग्जिस्टिंग वीडियोस भी भेजे हैं जो हम सारे ये फंक्शन में डिस्प्ले करेंगे। उसके साथ साथ हमारा जो ये सपोर्ट मैकेनिज्म है, हमारे डोनर्स जिन्होंने हमको ये डिफिकल्ट टाइम में सपोर्ट किया, उनमें से कुछ लोग जो यहां उपस्थित हैं उनका भी सम्मान करना चाहेंगे और उनसे भी रिक्वेस्ट करेंगे कि वो अपना एक्सपीरियंस और अपना तजुर्बा जो है वो सारे पेशेंट्स के साथ शेयर करें। So without any further delay, I would invite Dr. Vishwanath Billa, my colleague from Apex Kidney Foundation, to say a few words about the unique project that we did in COVID collectively with Apex Kidney Foundation, IIT Mumbai, and our two friends from IIT Mumbai are also here. We will invite them, and I would request Dr. Billa to come and say a few words after the video. Yeah. Can you play the video plus first? Thank you. In early May 2020, as COVID-19 ravaged Mumbai, the city's administration faced a very serious and unexpected challenge. From the most vulnerable and hardest hit patients, those on permanent dialysis treatment. Kidney failure patients need dialysis 3 times a week. Even if they miss one dialysis, it can be life-threatening. In late April and early May, many dialysis patients missed their dialysis sessions and hence they died. Some dialysis centers just stopped functioning. There were various reasons for this. A large number of patients in dialysis centers started becoming COVID positive. As a result, there was a fear that other patients also might get positive. Those dialysis patients who turned COVID positive did not know which dialysis center to go to for their dialysis. Also, even if they went to the dialysis center, they were not getting slots for dialysis. Municipal Commissioner Mr. Chahal supported us in a very big way because without the machinery of municipal corporation, this was not possible at all. And it was his idea to take this through a software. So if they had symptoms of fever or cough, or in some cases even if they were asymptomatic and they were tested, they had to be dialyzed at a suspect facility till the COVID report came through. All these centers, including the COVID suspect facilities as well as the COVID positive facilities, were started in public and private hospitals across the city. Clearly, the COVID pandemic
was beginning to affect our dialysis patients. Each day we had new dialysis patients getting diagnosed with the infection, and we did not have a readily available dialysis slot for them in a suitable facility in the city. The municipal corporation made a huge effort and classified centers as COVID positive, COVID suspect, and COVID negative. So we had patients on one side, we had the solution in the form of the facilities on the other side. What was missing was the connectivity. To achieve this connectivity, we approached IIT Bombay, and they helped us develop a dashboard which eventually began to be called as Project Victory. So this dashboard helped identify each and every COVID positive dialysis patient in the city across centers, and readily available information on positive slots in the public and the private sector across the city were both available on the dashboard. The coordinator had to just link this patient to this facility, and within a record period of less than 48 hours, virtually 97% of such patients were able to receive their slot. So there were no deaths that happened either because these patients' dialysis was denied or dialysis was delayed. The moment we realized that how alarming the situation was, Honorable Shri Uddhav Balasabh Thackeray, Chief Minister of Maharashtra, Honorable Shri Aditya Uddhav Thackeray, Guardian Minister of Mumbai Suburban District, and our health department, we all swung into action and resolved to fully back this plan on dialysis. Our success rate is comparable to one of the best in the world. Chahal is a great leader, makes decisions very fast and execute them. He's a taskmaster. And the Honorable CM, Mr. Uddhav Thackeray, was very supportive and he was involved throughout the process. We have been fighting COVID-19 since last year. The whole world knows how difficult this battle is. Sometimes many health crises occur simultaneously. While the pandemic was on, the other crisis was the need of many patients for dialysis. The big question was how to do dialysis in the COVID era. Often patients didn't even know whether they were COVID negative or COVID positive, but they had to have dialysis thrice a week to survive. In such a situation, Dr. Bichu came forward like an angel. Dr. Bichu, I would like to thank you and your colleagues very much, because your team along with MCGM and the IIT engineers came up with the concept of the portal coviddialysis.in. All our worries were removed. I would like to express my satisfaction that not a single patient has died due to lack of dialysis after this portal came in, and I thank you heartily for this achievement. In fact, Dr. Saib, the word thank you is very small for you. With all the machinery of the municipal corporation, the battle you and your colleagues are fighting day and night, I have no words other than to say a heartfelt salute. Till December 31st, 2020, 1,418 patients had benefited. At a time of fear and despair, some of Mumbai's most eminent citizens came together to bring back hope and life. Let us celebrate the victory of collective vision and will. Project Victory. Good morning, everybody. I don't have to speak anything more after this video about Project Victory. 1,400 lives were saved. And as you can see, extreme problems warrant extreme solutions in a very, very timely fashion. And this city and this country has people who are committed
to do this for such extreme situations, all it requires is some effort to put the team together. I think we were very, very fortunate to have IIT Bombay on our side, and I take this opportunity to invite Professor Narayan Rangaraj, who heads the Department of Operations Research there, and Professor Santosh Narona, who heads the Department of Chemical Technology, and he knows everything about every other branch of science. So they have been called professional colleagues, friends, and now I would actually call them partners in the Apex Kidney Foundations for what they have done for us, and I'm sure they'll do a lot for this foundation in the coming years. Please, Narayan and Santosh. It's a very small memento from us. I would like you to say a few words. I'll hold this for you. Good morning, everybody. I don't know exactly what to say, but I'm just very happy that we could be a part of this effort when the need arose, and we could respond quickly. And basically, we had to learn what was the need dynamically, and the learning for me was that if we invest in some skills and we are in touch with each other, then actually we can probably do a lot. And it happened that with a little bit of logical support from our side, but more importantly, an investment in the right skills in the organization of data and various things, which I would request Santosh to talk a little more about. We could put together a team at short notice, in fact within a few days, and build the required system which served the purpose. And I would only say that it shows that we can actually do things systematically and effectively. And probably we should use this platform to learn more about various aspects of kidney disease treatment, even apart from COVID requirement analysis, because it has shown that there is a data-driven way of managing things effectively and collecting information and sharing it in the community. And probably there's a lot of potential for going forward, locational aspects, logistical aspects, treatment aspects. So I hope that we get the chance to do something more as we go along. About the specific effort itself, I think Santosh would be able to give a little more insight as to how we were actually able to be part of this team. So thanks very much for this. So Santosh and Narayan and the team built this portal in 3 days, flat. And I request Santosh to speak a little bit more about this. Thanks, Vish. More precisely, a set of 3 employees and students of IIT Bombay put this together. And we had a means of literally working overnight while the doctors worked during the day, and in the late evenings came in and told us what the requirements were in terms of portal specifications. But it's important to understand that a bunch of things came together very quickly, including political will. For example, if you have a portal, it still doesn't mean that there is data coming into the portal, and it required BMC to get organized here and try and get approximately 200 odd hospitals on board very fast, so that data could start flowing and then things could be done with the data. So the portal is just ultimately a means to pulling in data and then analyzing it, and that's what ultimately a group of people got together and did. As was pointed out, it's a moment where a bunch of people coming together, debating what needs to be done, and then internally executing things. There's a lot of clarity of thinking which happened with essentially the pressures that were put on us. It's an exercise which in some ways after the first wave was not needed. Most of the criticality had to do with dealing with large numbers of patients requiring to be shunted to alternate centers during the first wave. We didn't see such a critical need in the second and third waves of COVID. We did keep track of case fatality rates, and this as a comorbidity
CKD as a comorbidity probably accounted for approximately 25% CFR in the first wave. And that went down to less than 5% in the second wave. And we've not seen fatalities beyond that, on the portal at least. Tells you what rapid organization can end up doing in terms of quality of healthcare. We're not done with looking at this data. For example, there's such wealth of data that we collected during this period of practically 9 months in the first wave, where this question that we now ask of what would have been an optimal response plan is something that we look at. And this is more in the context of where could the COVID positive centers have come up, where could we have started allocating these centers more optimally, not just from the standpoint of addressing the load on dialysis centers, but also from the patient's perspective, cutting down their commutes. We have been looking at some of this data, and we are aware that a large number of people entered Mumbai for dialysis care from the rest of Maharashtra. And that tells you that there was already a sense that this was a more organized setup in the city. So in many ways, this is this process of getting onto this problem alerts us that in terms of health informatics, there's lots of potential here if we essentially start conversations together and set up systems which benefit ultimately the patients. But this involves doctors talking to engineers and vice versa, and setting up platforms by which better services can be provided. So, thank you. Thank you so much. Back to you, Jatin. Thank you, Santosh and Narayan. As our founding trustee of the foundation walks in, I'd request our co-founding trustee, Mr. Hitesh Mehta, to come up on stage and say a few words. Hitesh Bhai is a non-medico. For a change, we have people who are not doctors, but whenever we meet Hitesh Bhai, we feel that he's actually more than a doctor and more than a nephrologist. And I'm sure he will have some wise words for us all, as we always see whenever we meet him. So, Hitesh Bhai, a few words about your association with Apex Kidney Foundation. And you have been a backbone for all of us over the last 15 years, and we hope to continue doing the good work and probably do more. Hitesh Bhai. Good morning, everyone here, all the warriors and the generals. When I was coming here, I just opened up my WhatsApp and saw that Hitesh Bhai, you have to speak. So I don't have a paper, and I will share with you some wonderful things that I experienced through the journey with Apex. So I'll take you a little beyond, and you said 2-3 minutes, but maybe I'll take a couple of minutes more. So the journey starts way beyond when Dr. Jatin was studying. And he, for his studies, was going to go to Canada. So I said that, Jatin, please come back. Because normally when doctors go to study, they sort of settle off in US or Canada because everything is much more lucrative there. He said, Hitesh Bhai, I will come back. I said, Jatin, you will not. I know most of the doctors go and they will then settle. During his study there, I once visited him in Canada. And again, I had that same talk, Jatin, please come back. You will need to give back to this country. And, years ago, things in this, on the medical front, it was not so great. I mean, it was so, there's a lot of corruption that goes on. And I knew Jatin from beginning, absolutely he would not be able to work in a scenario which was a corrupt scenario in this medical world. So I said, okay, don't worry, you please come and clean up things, don't worry. So he had 2 people who he knew. One was Mr. Rupen Kothari, which is his uncle, and one was me. Both of us, we sort of ensured that you don't worry, whatever you need, whatever support you need, we are there. So once he decided to come back, now why I'm sharing with you this journey, that what looks to be good today, everyone sitting here in this room is a beneficiary from Apex.
But what I wanted to share with you is that how I am feeling as the number one beneficiary of Apex and how. Now, I had never thought, I'm a non-medico, I'm a businessman, done only my 10th, but still I knew Jatin from when he was young. He's my cousin. I didn't know how he's going to do things. So when he came to Bombay, he said that, he says, I have got 3-4 friends who are as clean, who are as passionate about the whole thing, and we want to set up something which is not there. So there was no dedicated kidney care entity like you have the heart facilities here now. In those days, there was nothing. And then I said, okay, no questions asked, tell what you need. And when he says that, yes, I have friends, we didn't even know them. Now we know that, a Dr. Billa or a Dr. All the 4-5 people that he had with him, they were all wonderful. And when we see this video, we see how dedicatedly. Now, to do this sort of work, it requires so much of a drive from within. Only then can you achieve this, right? And it makes me so proud when I say that I'm the number one beneficiary sitting in this room. What I feel is I'm the number one beneficiary is because the happiness. I'm not a kidney patient as yet. I'm not done dialysis as yet. But what makes me happy? Just imagine when the world today is fighting, is killing. Here are the generals who are saving. They said that, okay, we saved 1,500 lives. And this is just in COVID. Other than that, how many lives they are saving? It is so gratifying to be to be a director, to be a part of this entity. And believe me, Jatin, thank you very much, Dr. Billa, Dr. Jatin, and Dr. Bichu, sorry. I am really, really grateful to all of you. The work you are doing is so good. And everyone sitting here, all of y'all and all of us who are beneficiaries, Apex Kidney Foundation is doing a wonderful job. Another thing that we need to note, that I don't know how many of y'all know, but once a year, Apex Kidney Foundation organizes a seminar, okay? And we have all the best of the nephrologists of the world come here and do the seminar. Now, this sort of a seminar doesn't happen anywhere in the world, or not many. But just imagine somebody coming to India and all of them come, you don't even charge anything. So this is an amazing achievement that all the doctors have done, and we need to give them a big hand. So Dr. Jatin, Dr. Billa, and Dr. Bichu, please continue your journey. We all are with you. And now as you go ahead, all the warriors, anyone who is a beneficiary will in their own way support this cause. So thank you very much, Jatin. Thank you for your words of wisdom, Hitesh Bhai. And is our colleague, Dr. Rajesh, here already? Okay, we're just waiting for him. Okay, next I invite on stage my very good friend and co-trustee at Apex Kidney Foundation, Dr. Srirang Bichu. Srirang is a nephrologist. He is the head of department at Bombay Hospital. And Srirang took the initiative to look at the education part in our foundation. As we all know, खाली dialysis patients को help करना ये एक ही माध्यम है जिससे हम किडनी केयर को इम्प्रूव कर सकें और लोगों को ज़्यादा सुविधा दे सकें. पर बैकग्राउंड में जो एक्टिविटी होनी चाहिए और जो होती है उसके लिए बहुत एफर्ट्स लगते हैं. और फ्रॉम डे वन श्रीरंग वाज वेरी पैशनेट अबाउट ट्राइंग टू गेट द डायलिसिस टेक्नीशियन कम्युनिटी एजुकेटेड. और इसके बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे. आई एम होपिंग दैट श्रीरंग कैन स्पीक अ लिटिल बिट इन हिंदी बिकॉज वी हैव अ जनरल ऑडियंस टुडे. सो थोड़ा बहुत हिंदी में लोगों को समझाएं कि कैसे अपन ने ये डायलिसिस एजुकेशन का इनिशिएटिव आगे बढ़ाया और उसके साथ साथ जो लोग आगे आए इसको सपोर्ट करने के लिए उसके बारे में भी आगे चर्चा करेंगे. श्रीराम. गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी. जब हमने ये 15 साल पहले एपेक्स शुरू किया और
3 सेंटर्स थे और बाद में बढ़ने लगे, तो हमने एक देखा कि सबसे जो मेन लिमिटिंग पॉइंट है कि जिसकी वजह से डायलिसिस पहुंच नहीं रहा है लोगों तक, वो मेन प्रॉब्लम था जो डायलिसिस करते हैं उनको हम डायलिसिस टेक्नीशियंस बोलते हैं, जैसे कि नर्सिस। तो ये ट्रेंड लोग नहीं थे, और जो टेक्नीशियंस काम कर रहे थे वो भी उस टाइम जो बाकी मतलब कि इवन 10th स्टैंडर्ड 12th स्टैंडर्ड जो लोग हैं उनको फॉर्मल ट्रेनिंग दिए बिना ऐसा देख के ऑन जॉब सीख के ये कर रहे थे। तो हमको लगा कि दो चीज़ें चाहिए, ये नंबर ऑफ टेक्नीशियंस बढ़ने चाहिए और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी अच्छी देनी चाहिए, क्योंकि वो कैसा डायलिसिस करते हैं उसके ऊपर पेशेंट का हेल्थ है। अगर वो अच्छा नहीं करेंगे तो हेल्थ अच्छा नहीं रहेगा। एंड हमको ये नहीं चाहिए कि पेशेंट्स जो है वो डायलिसिस पे खाली लाइफ जिंदा रहे, लेकिन उनका लाइफ कंस्ट्रक्टिव हो, अच्छा हो, वो उनको लाइफ में मज़ा आए, और जब तक ट्रांसप्लांट नहीं होता है तब तक ट्रांसप्लांट के लिए फिट रहे। इस चीज़ के वजह से हमने ये ऐसा एक ऑर्गेनाइज ट्रेनिंग करने की सोची, और ये हमने इंडिया का फर्स्ट डायलिसिस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हमने उस टाइम शुरू किया, और अभी तक लगभग 700-800 स्टूडेंट्स ट्रेन हो चुके हैं, और वो अभी बाकी लोगों को ट्रेन कर रहे हैं। और भी काफ़ी संस्था ओपन हुई है, सर्टिफिकेट कोर्स हम करते हैं, डिप्लोमा कोर्स करते हैं और डिग्री कोर्सेज भी करते हैं। और ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया थ्रू जो वोकेशनल एजुकेशन की स्ट्रक्चर लगभग 7-8 साल पहले जब नरेंद्र मोदी जी फर्स्ट टाइम आ गए, उस टाइम पहले बरस में ही उन्होंने घोषित किया था कि वोकेशनल एजुकेशन होना चाहिए, उसमें एक पार्ट कर लिया गया था। और इस हिसाब से जो इम्पेटस मिला है ये प्रोग्राम को, कि अभी ऐसा नहीं सिचुएशन आता है पूरे देश में कि टेक्नीशियन नहीं है इसलिए डायलिसिस केंद्र नहीं ओपन हो रहा है। तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग दैट हैज़ हैपेंड टू आवर कंट्री। और इसकी वजह से इवन छोटे छोटे गाँवों में भी, रिमोट प्लेसेस में, बिहार मध्य प्रदेश में भी डायलिसिस केंद्र ओपन हो रहे हैं, और ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट इनको सपोर्ट कर रहा है। ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने सिम्बायोसिस, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, ये 3 लोगों के साथ हमने पार्टनरशिप्स किए हैं, और इसकी वजह से ये सब पॉसिबल हो रहा है। और ये 700 लोगों में जो स्टूडेंट्स आते हैं वो एकदम पुअर कम्युनिटी से आते हैं, एकदम सोशल इकोनॉमिकली पुअर कम्युनिटी से, खेड़ों से आते हैं। कई लोगों को वापस छुट्टी के लिए जाने के पैसे नहीं थे, तो हमने वो स्टाइपेंड्स देना शुरू किया सबको। ये शुरू करने के बाद एक 6-7 महीने में ही स्टाइपेंड्स मिलता है स्टूडेंट्स को, और उसके साथ में उनको 100% गारंटी मिलती है कि उनको एम्प्लॉयमेंट मिले। तो अभी तक ऐसा एक भी स्टूडेंट नहीं है जिनको 1 हफ्ता या 10 दिन के ऊपर विदाउट एम्प्लॉयमेंट रहना पड़ा ट्रेनिंग होने के बाद, और ट्रेनिंग के टाइम भी पैसा। और इसके लिए बहुत सारे सपोर्ट्स हमको मिलते हैं, ये स्कॉलरशिप। और मेन उसमें हमारे राजन भाई है जिन्होंने हमको सपोर्ट किया। ही इज़ हियर, राजन भाई प्लीज़ कम। तो और लगभग अभी लास्ट 3 साल में ही हैज़ बीन सपोर्टिंग अस थ्रू हिज रोटरी क्लब ऑफ बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन, और डिग्री कोर्सेज और डिप्लोमा में सब स्टूडेंट्स को फ्री एजुकेशन मिलता है। और उसके साथ में हम हमारे एपेक्स की तरफ से, कंपनी की तरफ से उनको स्टाइपेंड भी देते हैं। तो आई वुड वांट टू वेलकम राजन भाई टू से अ फ्यू वर्ड्स। पहले आपको फेलिसिटेट करेंगे। Does not come. Yeah. Good morning, friends and kidney warriors. First of all, I would like to thank Apex Kidney Foundation trustee and directors for giving me opportunity to say a few words about our Rotary Club association with them.
I may be repeating few things, but please bear with us. I am member of Rotary Club of Bombay Metropolitan. Our and Apex Kidney Foundation Association is since last 10 years. And together we have done project worth rupees 2 crores. In that we have spent around 70 lakhs for poor patients with free dialysis and medications. We have spent around 65 lakh rupees to provide totally free training to 65 underprivileged students to become kidney dialysis technicians. And after completion of 3-year course, all of them have got employed in the same field. And another 20 students are currently getting trained for same 3-year course to become kidney dialysis technicians. We have installed 3 dialysis machines at Kalyan Center, where poor patients are getting free treatment, and we hope to continue our good association with Apex Kidney Foundation. And as we found them completely believing in our Rotary principle of the 4-way test. Is it the truth? Is it fair to all concerned? Will it be build goodwill? Will it be beneficial to all concerned? So the way the Hitesh Bhai said, we are getting so much happiness doing such a good work with Apex Kidney Foundation. Thank you. Thank you, Rajan Bhai. Rajan Bhai is just the face. There is a huge Rotary Club Mumbai Metropolitan group that we are associated with, and unfortunately because of the restrictions, सबको invite नहीं कर सके हैं, but I think a lot of them are on Zoom listening to this session. This is the day for the kidney warriors. So let's start with a few of our warriors who are here, and we'll listen to some of the videos and some of them in person as we invite them one by one. So can we first have the video for Shibani Gulati? I think there was some problem with the video when I was also trying to view it. Doesn't matter, we don't need the video. We have Shibani Gulati here with us, so please welcome her. Before introducing Shibani, I want to just ensure that all the kidney warriors have a place to sit. Indranil, just make sure that we have everybody seated, and try and occupy even the spaces ahead. There are quite a few chairs available. So Shibani will share her journey of being a kidney patient. I don't think looking at her you would say that she is a kidney patient. Whenever I stand next to her or whenever I see her in clinic, it looks like I am the patient and she is the doctor. But let's hear from Shibani what her experience has been through this journey of the last, I think, 15 years of being a kidney patient and how to overcome all challenges. And I can assure you that once you hear her, you will agree with me that nothing is impossible. Shibani. Thank you, Dr. Thari. I think for me, he's been the face in terms to feel that there is hope. So again, I'll speak in Hindi today. Like, I really take pride in speaking in Hindi. मेरी जर्नी स्टार्ट हुई थी 2004 में जब मुझे किडनी डिजीज़ डिटेक्ट हुआ था. आई वॉज़ वेरी यंग, सिर्फ 24 साल की थी. बट टू कट इट शॉर्ट, 30 में मेरा ट्रांसप्लांट हुआ था. एंड फ्रॉम देयर, वहाँ से मैंने अपनी जर्नी को डिफरेंट मोड पे लेके आई. सबसे पहले मैंने अपने लाइफ में सोचा कि ट्रांसप्लांट होना आपके लिए एक फुल स्टॉप नहीं है. यहाँ पे जितनों का भी ट्रांसप्लांट हुआ है, हमारी स्टोरी स्टार्ट ही तब होती है क्योंकि एक ऑर्गन डोनर है. सो जहाँ पे जितने भी ऑर्गन डोनर है, मैं उनके लिए सबसे पहले इट हैज़ टू बी अ ह्यूज राउंड ऑफ अपलॉज. बिकॉज अगर हम यहाँ पे खड़े हैं, बिकॉज उनकी वजह से कोई एक डोनर था जिसने हमारी लाइफ को
के लिए एक गिफ्ट दिया, और हम उसको ये सोच के कि हाँ ट्रांसप्लांट हो गया और मेरी ज़िंदगी बस, आई थिंक वहाँ से आपको अपने लिए एक नया मुकाम रेडी करना चाहिए। मैंने तब वहाँ पे सोचा था कि शायद यही है, लाइक ट्रांसप्लांट हो गया एंड ख़त्म। मुझे दुनिया ने रियलाइज़ करवाया कि आप एक पेशेंट हो, पेशेंट रहोगे। उस दिन से मैंने सबसे पहले ये सोचा कि मैं पेशेंट नहीं हूँ, मैं एक वॉरियर हूँ, बिकॉज मैंने अपनी लाइफ में इतना कुछ आई हैव गॉन थ्रू विद माई डिजीज़, विद अ ट्रांसप्लांट, कि यहाँ से मुझे आगे बढ़ना है। सो द फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज started with a walk, that 2-kilometer walk, 3-kilometer walk. I did the first 5-kilometer run in 2012, and वहाँ से डॉक्टर कोठारी से मुझे सबसे चीज़ ये मिली कि यहाँ पे अब रुकना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। सो 2014 में मैंने पहला 21 किलोमीटर कदम किया था अपना, एंड उसके बाद तो मतलब ऐसा था कि वो एक मोटिवेशन थी, वो मेरे लिए एक टर्निंग पॉइंट था लाइफ का, कि यहाँ से जो कोई नहीं कर पाया शायद मैं करके मैं भी किसी को इंस्पायर कर पाऊँगी, मैं भी किसी को मोटिवेट कर पाऊँगी कि वो अपनी लाइफ में ट्रांसप्लांट होके एक विक्टिम ना बने, बल्कि एक इंस्पिरेशन बने अपनी स्पेस में। मे भी रन ना करें, मे भी जैसे मैं मैराथन्स भागती हूँ, आप मैराथन मत भागिए, बट वॉक करिए, अपनी लाइफ को इतना स्टेबल, और एक तरीके से आप हेल्थ एम्बेसडर बनिए लोगों के लिए, कि ट्रांसप्लांट होने के बाद या डायलिसिस होने की वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी को रोका नहीं, मैंने अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाया। सो आज 2014 से लेके टिल अबाउट टुडे मॉर्निंग आई डिड माई 21 किलोमीटर्स। सो मैं 21 किलोमीटर्स कर चुकी हूँ, और बहुत सारे 10 किलोमीटर्स बाइकिंग, साइकिलिंग तो करती रहती हूँ। बट बात ये नहीं है कि आप क्या अचीव करते हैं, बात ये है कि आप अपने अंदर क्या फील करते हैं। क्या आप अपने आप को एक विक्टिम बना के, पेशेंट बना के अपनी पूरी ज़िंदगी निकालना चाहते हैं, या जो आपको गिफ्ट मिला है क्या मैं उस चीज़ के लिए जस्टिस करती हूँ। तो अपनी लाइफ को मेरे लिए ये कहना है कि प्लीज़ ट्रांसप्लांट होना या डायलिसिस होना आपकी ज़िंदगी के लिए एक फुल स्टॉप नहीं, बल्कि एक नई बिगनिंग होनी चाहिए आपके लिए। एंड फ्रॉम हेयर प्लीज़ एंश्योर you have such able doctors. We have Apex Kidney Foundation, which has been like a support system for so many people. यहाँ पे हर लोग बता सकते हैं कि एपेक्स ने इन 15 सालों में लोगों के लिए कितना कुछ किया है। So from here the only thing is never give up in your life, because हर एक हार के बाद ही जीत होती है। So every day make sure कि in your life, whether you're going through the worst of falls in your life, I know कि अगर आप वहाँ से उठते हैं तो एक strength चाहिए, but वो strength सिर्फ आपके अंदर है। So don't look out for that strength outside, look it within. And I'm very sure everybody who's gone through a transplant, I have seen people on dialysis. I have my friend sitting there. She on her dialysis used to do weights, and I used to get so inspired by her. Become an inspiration for yourself, for your family, and for your doctors also, कि वो आपको देख के प्राइड फील करे कि हमने इनका ट्रीटमेंट किया। एंड ऑल्सो फॉर दैट ऑर्गन डोनर आपकी लाइफ में, चाहे वो आपका भाई है, बहन है। लाइक मेरे लिए मेरा भाई इज़ अ गॉड सेंड। सो उसने मेरे लिए इतना बड़ा गिफ्ट दिया। आई एम श्योर इट्स गोइंग टू बी द सेम फॉर एवरीवन। सो प्लीज़, द ओनली थिंग दैट आई वांटेड टू से वाज, प्लीज़ नेवर गिव अप। इट्स अ न्यू बिगनिंग। प्लीज़ treat this as a new beginning and make sure that you become an inspiration for yourself and for the world. Thank you very much. Can we call Vishwanath to felicitate Shibani? I take home a very, very important message from you. I've internalized every word that you said. Like you did, I'll walk first. Yes, thank you very much. Thank you. Thanks for being part of our time. Thank you. Next warrior is Mr. Vivek Gosavi. I think Vivek can come forward. विवेकला मी रिक्वेस्ट केलं होतं की थोडा मराठीमध्ये बोलायचं. विवेक actually is the director of the Maharashtra State Education.
जे आपण पुस्तकं वाचतो, आपले मुलं जे वाचतात ते सगळे पुस्तकावर यांची सही असते फर्स्ट पेजवर. अँड विवेक हॅज हॅड अ व्हेरी स्ट्रेंज रिलेशनशिप विथ किडनी डिजीज. His mother had kidney failure. She underwent a transplant. Unfortunately, because of cardiac issues, we lost her a few years back. His father is also on dialysis and he's keeping very healthy. He is in Aurangabad by himself. He still walks, I'm told, 6 kilometers every day. He takes regular dialysis 3 times a week. And Vivek, in the young years of his life, when he was at the prime, actually went through this ghastly disease called kidney failure. पर उसमें से उभर के कैसे आगे बढ़ना है, ये विवेक की स्टोरी से आपको समझ में आएगा. Vivek's transplant has been, I think, 10 years almost, and Vivek will tell you a little bit about his journey before we felicitate him. Vivek. थैंक यू सर. सबसे पहले तो मैं हितेश जी का थैंक यू बोलूँगा कि उन्होंने जतिन सर को बार बार ये रियलाइज़ किया कि आप इंडिया वापस आ जाओ, और उनकी वजह से आज ये एपेक्स किडनी फाउंडेशन खड़ा हो गया, और हम जैसे सारे किडनी पेशेंट्स, ट्रांसप्लांट पेशेंट्स, डायलिसिस पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल हुआ. इसलिए मैं जतिन सर का और उनके जो सारी टीम है, डॉक्टर बिल्ला है, डॉक्टर बिच्चू है, वैशाली मैडम है, और राजेश कुमार जी जो है, जो एपेक्स में सब पेशेंट को देखते हैं, उन सब के लिए थँक यू कहूँगा. मी थोडं मराठीत पण बोलतो. मी एका सरकारी ऑर्गनायझेशनमध्ये काम करतो. जे बालभारती, जे आपण शाळांमध्ये पुस्तकं वाचतो, त्या पुस्तकांचं सगळं डिझायनिंगचं काम, लेआउटचं काम, प्रिंटिंगचं काम आणि डिस्ट्रीब्युशनचं काम मी बघतो. मला स्वतःलाच माहीत नव्हतं की आपली किडनी एक फॅमिली पिकनिकवरनं परत आलो, त्यामुळे ती आज येऊ शकली नाही. 2011 जुलैमध्ये माझं ट्रान्सप्लांट झालं. ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर जसं आत्ता मॅडमनी इथे सांगितलं की आपण जे काही आपल्याला एक गिफ्ट मिळालेलं आहे, एक किडनी डोनरनी आपल्याला जी काही त्यांची एक ऑर्गन काढून आपल्याला दिलेलं आहे आणि आपल्याला आपलं लाईफ सेव्ह केलेलं आहे, तर आपण पण हे सगळं करत असताना एकदम सकारात्मक राहायला पाहिजे. एकदम पॉझिटिव्ह विचार जो आहे तो आपण ठेवला पाहिजे. मी आज 14 तास काम करतो आणि हे सगळं करून बाहेरच्या पण ॲक्टिव्हिटी सांभाळतो, पिकनिक करतो. जसं मॅडमनी सांगितलं तसंच ट्रान्सप्लांट झाल्यानंतर 2 वर्षांनी असा एक योग आला की मला वैष्णोदेवीला जाण्याचा योग आला. मी सरांना विचारलं, सर मी जाऊ शकतो का, आता हे ट्रान्सप्लांट केलेलं आहे. सर म्हणले जायचं आणि पायी जायचं वरती. म्हणजे की आपण पण जसं आपल्या डॉक्टरांवर आपण विश्वास ठेवायला पाहिजे. कुठलाही आजार असला, कुठलंही आपल्याला थोडंसं सिम्पटम्स जाणवले की पटकन डॉक्टरांना कॉन्टॅक्ट करून आपण हे केलं पाहिजे. आता मी 1-2 आठवड्यापूर्वीचीच गोष्ट सांगतो की मला थोडंसं अनइझी वाटत होतं. मी सरांना फोन केला की सर मला असं वाटते की आपण याच्यामध्ये मला थोडंसं त्रास जाणवतो आहे, तर काय करूया. सर म्हणले काय करायचं. मी म्हणलं सर मला ॲडमिट करून घ्या आणि तपासून घ्या. ॲडमिट झालो, तपासून घेतलं, काही निघालं नाही. आपण जेवढं पॉझिटिव्ह थिंकिंग करू तेवढं आपल्यासाठी खूप म्हणजे हेल्थवाईज खूप चांगलं आहे. सकारात्मक राहायला शिकायला पाहिजे. दुसरी मी आपल्या सगळ्यांना एक विनंती करतो, सगळ्यांना शक्य आहे की नाही मला माहीत नाही, परंतु प्रत्येकाची कुठेतरी ओळख असते, काहीतरी असतं. आज ॲपेक्सनी आपल्या सगळ्यांसाठी एवढं मोठं हे कार्य उभारलेलं आहे. याच्यात आपल्याला जर काही हातभार लावता आला, आपल्या ओळखीने असेल किंवा आपल्या आणखी याच्याने असेल, हे आभार मानतो आणि हे माझे 2 शब्द. Request Rupen Kaka to please felicitate Vivek. Vivek. यहाँ आओ काका. हाँ साइड प्लीज काका. थैंक यू, थैंक यू. जब डॉक्टर बिच्छू ने सब डायलिसिस टेक्नीशियन और एजुकेशन के बारे में बात किया, तो हमारे एक पिलर हैं एपेक्स में जिनका नाम है सुधीर बग्गा राव. वो चुपचाप ऐसे पीछे बैठे हुए हैं. ऐसे लगता है कि शायद लास्ट मिनट उनको इनवाइट किया है, इसलिए मेरे से थोड़ा नाराज हैं. पर सुधीर प्लीज कम फॉरवर्ड.
You've been a big force for us in the Apex School of Dialysis Technology and of course with the Apex family. Please come forward. At Apex, he is also the dean of our school, and during the COVID period, जब ये टेक्नीशियन डायलिसिस करते थे, उनको पता था कि उनको बहुत हाई चांस है कि उनको भी कोविड होगा। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 4-4 घंटे ये ट्रीटमेंट करना पीपीई किट पहन के, आप विचार भी नहीं कर सकते उतना संघर्ष इन सब पूरे टेक्नीशियन, हमारी जो फैमिली है, करीब 500 टेक्नीशियन है हमारी फैमिली में, और उन सब की वजह से ये पेशेंट्स को जिसको हमको डायलिसिस प्रोवाइड करना था वो हम कर चुके हैं और करते रहेंगे। तो इसलिए सुधीर बग्गाराव का आभार मानना चाहूंगा। और डॉक्टर राजेश इज कम, he's just coming up on the lift. I wanted him to felicitate Sudhir, so maybe we'll keep Sudhir on hold for 2 minutes. Let's go to the next person, someone who's again an inspiration to me, and here he comes. The big man walks in the moment I say his name. So Rajesh Kumar, he's our colleague and co-trustee at the Apex Kidney Foundation. He has been largely instrumental in providing the best sort of technical support that we require for an organization. और ये पूरा जो एजुकेशन का डॉक्टर बिच्छू और हमने सबने साथ में मिलके जो अभिक्रम चालू किया था, उसमें राजेश का बहुत बड़ा हाथ है। Rajesh is more than a brother to me, and he's been a part of this family for almost 2 decades. Most of you already know him, but I would want Rajesh to say a few words on this occasion where we are felicitating all our kidney warriors, and after that felicitate Sudhir Baggarao. Rajesh? गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज का जो ओकेजन है इसमें मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगा कि एपेक्स किडनी फाउंडेशन जो पिछले 15 साल से हर क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है, हम लोग का एक ही मेन गोल है कि पेशेंट और जो भी हमारे मतलब हमारा जो कर्म क्षेत्र है उसमें हम लोग ऐसा काम करें जिसमें कि जितने भी हमारे जो वॉरियर हैं उनको उसका बेनिफिट मिले, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे डायलिसिस हो या एजुकेशन जो पेशेंट के लिए हो, उस सब में उनको फ़ायदा पहुंचाने का हम लोग कोशिश करते हैं। हर एक दिन हम लोग एक कोशिश करते हैं कि कैसे उनकी जीवन अच्छी बने, क्योंकि एक पेशेंट जो होता है वो अपने पूरे परिवार का सबका सपोर्ट उसको लगता है, डॉक्टर का सपोर्ट लगता है, सोशल वर्कर का सपोर्ट लगता है। उन सब सपोर्टों के बीच में उसकी ज़िंदगी जो होती है, क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें लॉन्ग टर्म केयर की ज़रूरत होती है, तो उसमें सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी होता है। मैं बस इतना ही कहना चाहूँगा आज के लिए। Can realize that how modest he is. He doesn't even want to speak much. But Rajesh, please felicitate Sudhir Baggarao, our main man behind the entire COVID pandemic dialysis that we were able to achieve. Yeah. Sudhir, you want to say a few words? Thank you. आगे बढ़ते हैं। ये दिन वॉरियर्स का है तो पहले सब वॉरियर्स को ही बुलाएंगे एक से एक। मिस जिग्ना अग्रवाल, and I would request Nikunj to come also. Nikunj is Jigna's husband, और होप करता हूं कि जिग्ना ने बहुत लंबा स्पीच नहीं बनाया है आज, but I know she is a little shy to speak, but Jigna has been a kidney warrior for the last 20 years, and again, just listen to her journey and you will understand what I'm talking about, how these people motivate us every day when we meet them. Jigna. Thank you so much, Dr. Jatin. Hi, as Doctor mentioned, I've been a transplant patient since quite a few years, and my journey started in 2004 when I was just 26. My father was a donor that time, but my journey was quite short, as
I had a chronic rejection in almost around 8 years, but due to some medications and everything, I was able to sustain that part of it, and I continued with my journey for 4 more years. That was the phase when actually Nikunj was the one who pushed me into the fitness world. He was like, no, even though that time I could not walk or barely, roam around in the house, he said, no, you have to go to the gym, you have to do your workouts, you have to push yourself. Forget being fit and stable. I did my certification as a personal trainer from American College of Sports Medicine. Plus, I also certified to become a clinical and weight management nutritionist, which really helped me to, understand my body better. Unfortunately, in 2020, I was on dialysis for 6 years under Dr. Jatin. But unfortunately, in September 2020, I was diagnosed with pneumonia, and it was quite critical. After that, complications after complications, I don't think I had almost lost hope, but he was a pillar of strength during during that time, But finally, after 6 long years, I have had my second kidney transplant, and I just completed 3 months of my second transplant. Thank you, Dr. Jatin, for all the immense care, love, and support that you showered on both of us. And thank you, Apex Kidney Foundation, for felicitating all we warriors. The last thing I would say, everything as warriors, more than we warriors, I would say our family, friends, doctors, they are our warriors who keep supporting us emotionally, financially, physically, everything. They are the ones who keep running behind us, So I feel they are the true warriors for us. Thank you so much. I think that was... Binkaka to felicitate Jigna. That was short? Yeah, that was good. Thank you. Thank you, Jigna. Thank you, Nikunj. Ismail Bhai is here? Not yet. Okay. Simran? Would like to call upon Hema Srivastav. Has Hema come? Yeah, come Hema. आइए. Mr. Srivastav, आप भी साथ में आइए. नहीं आए? अच्छा, ठीक है. बेटे को ले आइए साथ में. Hema has been a kidney warrior for, again, almost 20 years. She has been on dialysis with us 17 years. आपको 2 मिनट बोलने का मौका देंगे. जरूर. मैं पहले तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, जतिन सर का, नीलेश शेडगे का, जिन्होंने हमें कांटेक्ट में रखा है अपने, जो हमें बराबर से बुलाते हैं, ध्यान देते हैं हमारा, और उन सभी टेक्नीशियन का जिनकी वजह से आज हम यहाँ पे खड़े हुए हैं, और आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद. ज़्यादा बोल नहीं सकते. मिस्टर श्रीवास्तव, जो अनफॉर्चुनेटली भी कुछ डिफिकल्टी से गुजर रहे हैं, पर हम हमारी ओर से जितना उनको मदद कर सकते हैं ट्राई कर रहे हैं. एंड ऑल द बेस्ट हिमा. ट्रांसप्लांट की जरूरत है. यस, तो आप ध्यान दें. जरूर जरूर. थैंक यू. थैंक यू. Next, I would call upon Mr. Chetan Shah. Chetan has come. Okay. Miss Hema Shroff and Deepak. I think I saw Hema somewhere. Yeah. Deepak, come. Come. अरे फेलिसिटेट तो करना है, आपको स्पीच नहीं देने को बोल रहा हूं मैं. Deepak is one of the shyest patients that I have seen. I need to tell you a little bit about Deepak and Hema. So, ये जो swap transplant का हमने registry चालू किया, and Vishwanath was instrumental in getting the swap registry, the first of its kind in India. पर दीपक और हेमा ये 2003-04 से मेरे पेशेंट हैं, और उसके बाद उनका बॉम्बे में आई थिंक सेकेंड स्वॉप ट्रांसप्लांट दीपक और हेमा का हुआ. आप सबको शायद पता नहीं होगा स्वॉप ट्रांसप्लांट क्या होता है, पर दीपक अपनी किडनी हेमा को देना चाहता था, पर उसका ब्लड ग्रुप मैच नहीं हो रहा था हेमा के साथ. तो तभी 2008 साल में जब हमने ट्रांसप्लांट किया, तो इवन इंडिया के जो ह्यूमन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में स्वॉप इंक्लूड नहीं हुआ था, और स्वॉप को एक
अनरिलेटेड ट्रांसप्लांट कहा जाता था। सिट, यू कैन सिट। सो वो स्वैप ट्रांसप्लांट जब किडनी का, हमको दीपक का किडनी किसी और पेशेंट को देना था और उसके एक्सचेंज में एक किडनी हेमा को लगाना था, जिसको हम स्वैप बोलते हैं। इट्स बेसिकली एन एक्सचेंज। तभी अपने लॉ में ये अलाउड नहीं था। इसके लिए उसकी परमिशन लेने के लिए मुझे लगता है कम से कम 1.5 साल हमको लगा। आप समझ सकते हैं कि हम सब तो हमारे प्रैक्टिस में बिजी रहते हैं और ये सब परमिशंस लेना, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मिलना बार बार, ये सब काम दीपक ने खुद जाकर के किया। उसने खुद डायरेक्टर ऑफ मेडिकल एजुकेशन के साथ 2 या 3 मीटिंग ली। उसने सब लिटरेचर भी स्टडी किया कि ये सारे देशों में हो रहा है, ये इंडिया में क्यों अलाउ नहीं कर रहे हैं, और कुछ अरसे के बाद हम उनका ट्रांसप्लांट कर सके। और ऐसे पेशेंट्स और ऐसे डोनर्स की बदौलत ही हम आगे चल करके ये इंडिया में लॉ में बदलाव ला सके। 2014 से इंडियन ट्रांसप्लांटेशन एक्ट में ये ऑफिशियली लीगल प्रोसेस हो गया है स्वैप ट्रांसप्लांट का, और उसकी सुविधा की वजह से काफी लोगों को, जिसके पास डोनर है फैमिली में पर ब्लड ग्रुप मैच नहीं होने की वजह से अगर वो डोनेट नहीं कर सकते, तो ये स्वैप अरेंजमेंट में उनका ट्रांसप्लांट इजीली हो सकता है बिना कोई एक्स्ट्रा खर्च के। ये रजिस्ट्री हमारे बनाने में दीपक का बहुत बड़ा हाथ है, इसलिए मैं उनको फेलिसिटेट करना चाहूंगा। आई वुड रिक्वेस्ट डॉक्टर विश्वनाथ बिल्ला टू फेलिसिटेट हेमा एंड दीपक। करंटली हेमा डायलिसिस ले रही है जो डॉक्टर बिल्ला के सेंटर में। थैंक यू फॉर कमिंग। थैंक यू। नेक्स्ट मैं बुलाना चाहूंगा मिस्टर स्मिथ वोरा। आई थिंक स्मिथ हैज नॉट कम, बट स्मिथ्स फादर एंड मदर आर हियर, सो राजुल एंड फॉरगॉट योर नेम, Dipen, yes, Dipen and Rajul, please come forward. ये इनका भी एक अनयूजुअल स्टोरी है कि जब इनके छोटे से लड़के को किडनी फेलियर की डायग्नोसिस हुई, तो सबसे पहले फादर आगे आए हैं कि मैं किडनी देता हूं। फादर आने के पहले ये स्वाभाविक हम समझते हैं कि सबसे कॉमन डोनर अपने देश में माता ही होती हैं, या तो सिस्टर होती हैं या तो वाइफ होती हैं। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में, और सिर्फ इंडिया में नहीं पर सारे वर्ल्ड में 70% ऑफ द डोनर्स आर विमेन। यू वुड थिंक कि ये वुमेन ही खाली क्यों डोनेट कर रहे हैं और मेन हैव द हैबिट ऑफ जस्ट टेकिंग किडनीज, बट अनफॉर्चुनेटली बिकॉज ऑफ मेडिकल रीजंस Rajul could not donate. She had some medical issues, and that's why Dipen came forward, and Dipen donated his kidney to his son. And I'm proud to say that Smith has become a computer design specialist. He's an artist. He's on his own now, and it's been almost 8 years. 8 years since the transplant, and he is now the pillar for the family, and he is the main bread earner of the family, as you would say. So really commendable that both these parents have supported him and, let their child live his dreams despite the problem of kidney failure. I would request Rupen Kaka again to felicitate Rajul and Dipen. Yeah, as Rajul is saying, currently भी कुछ वीडियो शूट पे ही गया है. So, thank you for coming. Thank you. Thank you. Thank you. मुझे लगता है नीलेश ने सडनली कुछ फोटोग्राफर को भी बुला लिया है. गुड. नेक्स्ट मिस्टर अल्लाउद्दीन पटेल. आइए पटेल साहब. So as you can see in the AV, पटेल साहब लास्ट 14 सालों से डायलिसिस कर रहे हैं. मुझे लगता है एपेक्स की शुरुआत से वो सभी एपेक्स सेंटर्स में घूम के आए हैं कि वहां बराबर सब काम चल रहा है कि नहीं, और डायलिसिस से 14 साल पे हैं, और वी आर वेरी प्राउड दैट ही हैज कम forward today for this dialysis warriors felicitation. I would request Rajesh to felicitate Allauddin Patel.
थैंक यू। मिस्टर प्रदीप जायसवाल, आइए प्रदीप जी। मैं सब यही कहना चाहता हूँ कि डायलिसिस लेते समय कुछ प्रॉब्लम नहीं होता, सब डॉक्टर और टेक्नीशियन यही सब के ऊपर डिपेंड रहता है कि वो कितना इम्प्रूव कर सकता है। मैं सुबह मॉर्निंग 5 PM निकल जाता हूँ, 1 घंटा रनिंग करता हूँ, लेकिन डायलिसिस लेते समय अगर याद रखे कि थोड़ा खा पी के जाए, चाहे बॉडी में बीपी लो हो, हार्ड हो, लेकिन थोड़ा खा पी के जाए। इससे क्या है कि इम्प्रूव होता रहता है। डायलिसिस करने के बाद में 4 घंटे के बाद मैं कम से कम 2 किलोमीटर रनिंग करता हूँ। इसके बाद काम पे जाता हूँ, मतलब 8-9 बजे तक मैं घर पे पहुँचता हूँ। आज 10 साल के ऊपर मेरे को डायलिसिस हो गया, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। इसके ऑल द बेस्ट। थैंक यू प्रदीप। रिक्वेस्ट शीतल टू कम फॉरवर्ड एंड जस्ट फेलिसिटेट मिस्टर जायसवाल। आप देख रहे हैं कि वो थाना हमारे जो गवर्नमेंट सेंटर में डायलिसिस ले रहे हैं और उनको पूरी तरह से फ्री डायलिसिस मिल रहा है, राइट प्रदीप? यस। अगर आप ये गवर्नमेंट सेंटर देखेंगे तो एक्चुअली ये कुछ हमारे प्राइवेट सेंटर से भी बेटर है। तो महाराष्ट्र स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ हमने जो साथ मिलकर के पीपीपी प्रोजेक्ट्स किए हैं, वो प्रोजेक्ट्स के साथ रह करके, नो इश्यूज, माय वॉइस इज हर्ड। ये गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स में करीब हम जो 45,000 डायलिसिस कर रहे हैं हर महीने में, आई एम प्राउड टू से कि 60% ऑफ दीज टोटल डायलिसिस आर डन आइदर फ्री और इन अ सब्सिडाइज्ड फैशन। आप सोचेंगे कि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी चला रहे हैं तो फ्री ट्रीटमेंट कैसे दे सकते हैं, पर ये गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है और जो अपनी प्रधानमंत्री की डायलिसिस योजना है, इसके साथ जुड़ करके काफी स्टेट्स में हम ये डायलिसिस पेशेंट्स को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है या जो कुछ फाइनेंशियल रीजंस की वजह से जो डायलिसिस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको फ्री डायलिसिस देने का काम हम साथ में मिलकर के कर रहे हैं। नेक्स्ट आई वुड इनवाइट मिस्टर अविनाश चांदोरकर and I would request Dr. Bichu to come on stage and speak a little bit about Avinash. We have a slide. And Bichu can also felicitate. Vaishali will talk. Okay. This is the habit that Dr. Bichu has developed. Whenever he is in trouble, he tells his wife to go ahead and solve the problem. come Vaishali. हा आमच्याकडे आता गेले 19 वर्ष आहे, म्हणजे 19 वर्षापासून त्याला प्रॉब्लेम आहे, पण आमच्याकडे आता तो 15 वर्ष आहे, डे 1 पासून आमच्याकडे आहे. पण त्याचं म्हणणं आहे आणि आमच्याकडे डायलिसिस घेतल्यापासून म्हणजे प्रत्येक 2-3 सेंटर्समध्ये तो गेला, आता ठाण्यामध्ये आहे. एकदा पण त्यांनी हॉस्पिटलायझेशन करावं लागलं नाही. हे त्याचं सांगितलं की मला खूप ठिकाणावरून फ्री डायलिसिससाठी 2-3 सेंटरसाठी मला सांगत होते की तुम्ही तिकडं शिफ्ट कर, पण मी सांगितलं मला अपेक्समध्ये माझं चांगलं तब्येत राहते, मला एकदा पण हॉस्पिटलायझेशन झालं नाही आहे, तर मला त्याच्यासाठी त्याला आमच्याबरोबर राहायचं आहे. प्लीज आपण हे करूया. ओके, थँक्यू अविनाश अँड ऑल द बेस्ट. Miss Rachel Mascarenas. Is Rachel here? Rachel takes dialysis at our Meera Road Center. Yes. Please come. Yes. I would request Rajesh to felicitate Rachel. I must say thank you for Dr. Rajesh Kumar and the Apex. Of course. Thank you. Thank you for coming and all the best. Thank you. As Shibani mentioned, सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता है कि उनको डोनर मिलता है, और अगर पूरे इंडिया में अगर फिगर्स देखें तो मोर देन 95% ऑफ किडनी फेलियर पेशेंट्स नेवर गेट अ चांस ऑफ ट्रांसप्लांट.
इसीलिए एपेक्स किडनी फाउंडेशन के माध्यम से हम डोनर अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए भी जो भी हमको माध्यम मिले, जो भी हमको अपॉर्चुनिटी मिले, हम ट्राई करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को किडनी डोनेशन के बारे में अवेयरनेस करें कि आपके जीते जी तो आप डोनेट कर ही सकते हैं अगर आपको आपके रिलेटिव को किडनी की जरूरत हो, पर आपके मरने के बाद आपको ये सब सारे ऑर्गन्स ऊपर भगवान के पास लेके जाने की जरूरत नहीं है। वो सब ऑर्गन्स आप प्लेज करिए, जब आप जीवित हैं तब प्लेज करिए, और ये कम से कम 8 से 10 लोगों की जान बचा सकती है अगर आप एक सिंगल आदमी डोनर बन के अपने मृत्यु के बाद डोनेट करें। ये भी हमारा एक फाउंडेशन का बहुत बड़ा मोटो है कि जितना हो सके हम ट्रांसप्लांटेशन के ऊपर फोकस करें और जितने लोगों की जिंदगी हम चेंज कर सकें। डायलिसिस तो माध्यम है उनको आगे जिंदा रखने के लिए, और उनको जितना बेटर क्वालिटी दे सकें वो तो एक माध्यम है ही, पर साथ में जितने लोगों को हम ट्रांसप्लांट में हेल्प कर सकें वो भी हमारा एक बहुत बड़ा उद्देश्य है। नेक्स्ट मैं इनवाइट करूंगा Mr. Vikas Bhattacharya. Has Vikas come? Okay. Mr. Sandesh Joshi. I think Mr. Sandesh Joshi is from our Sunshine Center. Maybe Vishwanath, you can speak a little bit about Sunshine. What our initiative was for starting the Sunshine Center. Yeah, I think it's important. Everybody here knows about Sunshine. Just as we have patients with hepatitis B and hepatitis C who take dialysis in our centers on separate machines for hepatitis C and hepatitis B, you would understand that there would be somebody who would also be HIV and needing dialysis. Such patients are an anathema to hospitals and to dialysis centers and to other patients, because in our minds, HIV is a crime. We tend to look at an HIV patient as if he's a criminal, and it's not conscious, but somehow unconsciously we tend to look at these patients this way. In the course of our professional career, we came across so many such patients who needed dialysis and who are being just chucked from one dialysis center to the other, their only crime being that they were HIV positive. So we realized without a question there is a need for us to start an HIV positive dialysis center, which we did. We called it by the very positive name called Sunshine. That center is called the Sunshine Dialysis Center. All our HIV positive patients go there. They take dialysis in this center. As you can understand, finding technicians to work here is also a challenge, because there is this inherent fear that what if I get infected? But through a process of education and counseling, we have been able, and incentivizing them, we have been able to identify techs who work in this center now very comfortable, very happy, and they take great care of all these HIV positive patients. And being an HIV positive patient, we can't reuse dialyzers as conventionally in any other non-HIV or Hep B, Hep C patient. We can use a dialysis filter 10 times. In an HIV positive patient, you can't. So the cost of the therapy goes up. So Apex Kidney Foundation stands behind these patients, and there are many such patients where 50% of the dialysis is funded through AKF. At the end of the day, the motto that we have is nobody should be turned back from our doors because he's HIV or because he doesn't have money. He has a right to health care, and if there is a right and there is a desire, AKF will help you. So with that, Sunshine was born, and it is providing human service to a lot of HIV positive patients. Thanks, Vish. And we have specific donors. I don't know whether Kalpesh and Neha are here, but can't see Kalpesh. Oh, he's sitting right at the back. Kalpesh, if you can come forward. And I would request Kalpesh to share a few thoughts. Kalpesh has been a big support, and his support was always there whenever we required support for patients like HIV positive, where the cost of dialysis is very high. हम कितना भी चाहें पर ये सब पेशेंट्स इतना अफोर्ड नहीं कर पाते, और कल्पेश जैसे डोनर्स आगे आकर के एक पॉइंट पे तो ये बोल रहा था कि पूरा सेंटर वो अडॉप्ट कर लेगा और पेशेंट्स को कंटिन्यूसली डायलिसिस देते रहेगा, पर जब भी हमको उनकी जरूरत पड़ी है तो कल्पेश एंड नेहा हैव ऑलवेज बीन अ बिग फोर्स एंड अ बिग हेल्प फॉर अस. सो a big thank you to Kalpesh, and I would want Dr. Bichu to felicitate Kalpesh. And Kalpesh can say a few words since we've been associated for quite a while. Come, Kalpesh. After you.
Come, Kalpesh. Good afternoon. I think my association with Apex has been through Dr. Kothari. I also suffered some kidney disease, and I think I was told for a replacement, and he said, no, we will fight. And I fought, I survived, and I'm over here. My right side kidney is 50% functioning, but I think he said that whatever we can save, we will save. So with that positive attitude, I think whatever Dr. Kothari has given me, I think I try to give it back a little to the foundation. So through philanthropy, we just met each other again, and he said that I asked him, what is the best way? So he mentioned to me about sunshine. And it just struck me at that time that this is the only thing what I will do with Apex. Whatever is the cost, whatever is the money required, you can tell us and we will fund that. And when I went to Apex Sunshine Center, and what I saw over there was something totally different. So as Dr. Vichu also mentioned that this is something different. Yes, it is something different, and I think I'm very proud to be part of our journey with Apex on this particular center, and we hope to continue the same in future also. Thank you again. Thank you. Let's invite Saleha Balwa and Ismail Bhai. Can we see them? Yeah, Ismail Bhai is here. Again, sitting at the back, he is actually the owner of this hotel. Ismail Bhai, आगे आइए, please. Ismail Bhai has had a strange relationship with kidney disease. Saleha, his wife, oh, here she is. इस्माइल भाई ने एक जबरदस्त काम किया है, आज डोनर को भी साथ में ही लेके आए हैं. फैंटास्टिक, फैंटास्टिक. फरजाना आइए, यहां खड़े रहिए, आपका फ्लोर है ये. So Ismail Bhai is a big businessman. He actually owns this hotel, and this hotel started only 2 months back. He sent me a message, 15 July, and he sent me a message, जतिन भाई आपको मेरी होटल में आना है कॉफी पीने के लिए. मैं बोला नहीं, कॉफी पीने नहीं आऊंगा, मैं आपका पूरा हॉल ही लेने वाला हूँ एक दिन, तो आप कुछ दिन रुक जाइए और हम प्रोग्राम करते हैं यहाँ. Thank you. Ismail Bhai has been a huge support for our foundation. He helps us with so many projects. He is a builder, entrepreneur, big businessman, owning multiple hotels all across the world. But one thing I can say about Ismail Bhai is that his simplicity, and he never comes across and throws his weight around. He will come quietly and sit in my office at Malad. He always prefers to come and see me at Malad on Saturday. आके बैठ जाएंगे, किसी को बोलेंगे नहीं, चुपचाप आधा घंटा वेट करना पड़े तो वेट भी करेंगे, फिर मेरे को खाली एक नोट भेजेंगे कि जतिन सर को खाली बोल दो कि इस्माइल भाई आ गए हैं. Saleha has had a tough journey, but with the grace of God, you can see उनकी डोनर, उनकी सिस्टर साथ में आई है, और ये किडनी दान करने की वजह से आप देख रहे हैं सलेहा जिसकी हेल्थ, एक समय पे मुझे लग रहा था कि जब मैंने इस्माइल भाई के साथ डिस्कस किया कि हम शायद सलेहा को बचा नहीं पाए, इतनी सीरियस थी वो, और भगवान की दया से और अल्लाह की मेहरबानी से आज तंदुरुस्त है. और आप डोनर भी देख सकते हैं, अभी तो एकदम ऑलमोस्ट कोई हेरोइन जैसे लग रही है आप. थैंक यू, थैंक यू. आई वुड रिक्वेस्ट, और हम लोग को जो भी ये जो सुविधा मिल रही है, जो हेल्थ की फैसिलिटी मिल रही है, आइए बोलिए आप, आपका ही फ्लोर है. नहीं बिल्कुल बिल्कुल. एंड वी आर वेरी गुड आफ्टरनून टू एवरीवन, एंड वी आर वेरी हैप्पी to see you all over here, and took out a precious time and joining us over here. And I should say thanks to Dr. Jatin Kothari and his entire team, whatever they are doing for the kidneys, about the awareness, and whatever I had seen is at Palampur, the way, because he has been telling me since last many times that please go and visit to my net center at Palampur. So I was
I went there and I saw that it was amazing, and it was like I was in America. The facility which he has set up. Manish Bhai are here. Manish Bhai had to leave, but really, they are the hats off to everyone. who Hats have off to created everyone. Medipolis in Palanpur. Right, excellent, and I was very much. It was a very mind blowing to see the facilities, and your entire team was there, and they spent the time, and I was there whole day over there, and they showed me the facilities, and I interact with the patients also. So the patients were also very happy, and they say that we being from the village, traveling all the way to Ahmedabad took some 2.5 hours. So better from the village nearby, there are hundreds of villages near. So at least within 10 to 15 minutes we reach there, and we get the same facilities what Ahmedabad is offering. So hats off to him and his team, and hope for the best. Thank you. And you are really a godsend for us, for everyone. And the way the God ने आपको जो जन्म दिया है, मालिक आपको और हिम्मत देवे, और हम लोग को जैसा सबको बेनिफिट मिले। बस मेरी प्रार्थना है। और ये जो बेचारी फरजाना है, मैं बोलती हूँ कि इनकी जो मेरी जो वाइफ है, एक टाइम ऐसा लगा 2017 के अंदर के इनका जो मल्टी ऑर्गन एकदम से फेल हो गया, और हमारी एकदम से हिम्मत टूट गई थी। और फिर मुझे किसी ने बताया कि डॉक्टर जतिन कोठारी साहब है, तो आप जरा मिल लीजिए। और उस वक्त उनका ट्रीटमेंट ग्लोबल में चल रहा था, तो एट दैट टाइम पता नहीं गॉड ने मुझे क्या हिम्मत दिया। सो आई टुक अ फर्म डिसीजन दैट वी हैव टू फाइट एंड वी हैव टू सी दैट शी सर्वाइव। So first transplant has happened in the year 1995. So that lasts long for 22 years. And I say to my wife that she is such a wonderful person, literally obeying what the doctor says. So उसके भी एक हेड आगे जाती है. So she never goes to the crowd places, and she, whenever I take to some wedding ceremony or wherever we go some outing, she carry her own food and she carry her own water also. So I have to sit idle and I just respect her. What she's doing it. Thank you for your support. So, and Farjana, I should salute to her that she was very insisting. And my wife was not at all ready. That I will die, but I will not take the kidney of my sister. But उसने एकदम से हिम्मत दिया कि नहीं, अगर तुम नहीं दोगे तो मैं मर जाऊंगी, मुझे देना ही है. तो वैसे करके इनका हौसला बढ़ा डॉक्टर साहब. थैंक यू इस्माइल भाई. डॉक्टर साहब से मिले और हमारी पहचान हुई, और ये हम लेगेसी इसको फॉरवर्ड लेंगे सर. बिल्कुल. एंड ऑल द बेस्ट टू योर एंटायर. थैंक यू वेरी मच. थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट. अगर खाने में कुछ प्रॉब्लम हुआ तो आपको पता है किसको कांटेक्ट करना है. थैंक यू. Next, I would call upon Simran Chandiramani. Simran is sitting right there at the back. We've had a long association. Simran's husband, Rajesh, is my school friend. And I think Deepak sitting there knows that we go back almost, 40 years? Deepak, 45 years. So Rajesh is a big man. He's traveling all around the world, and that's why he sent Simran. Once you see Simran, do you see that she's a patient? I fail to believe that she's actually a patient. She had tremendous challenges, not just kidney failure, but she also had a brain tumor. And the reason I'm saying this story is, one day prior to the transplant, her sister was the donor. One day prior to the transplant, when she got admitted, or when she was supposed to get admitted, मुझे मैसेज भेजा राजेश ने कि सिमरन इज नॉट फीलिंग वेल, आज ठीक नहीं लग रहा है उसको, थोड़ा हेडेक हो रहा है. एंड समहाउ कुछ ऐसा लगा कि नहीं, अपन ट्रांसप्लांट रोक देते हैं, पहले चेक कर लेते हैं कि क्यों, व्हाई शी इज नॉट फीलिंग वेल. क्योंकि डायलिसिस सब अच्छे से चल रहा था, सब डोनर का टेस्ट हो गया था, एवरीथिंग वाज रेडी. बट समहाउ वी गॉट द फीलिंग कि नहीं, अपन रुक जाते हैं. एंड वी गॉट अ सीटी स्कैन एट नाइट द सेम डे प्रायर टू द ट्रांसप्लांट, एंड देयर शी हैड अ बिग ब्रेन ट्यूमर. First, we had to tackle the brain tumor, get that out of the picture, ensure that जो न्यूरोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन उसका ट्रीटमेंट कर रहे थे वो उनको फिटनेस दे कि वो ब्रेन ट्यूमर होने के बाद आप ट्रांसप्लांट कर भी सकते हैं कि नहीं, वो भी हमको पता नहीं था. और ये बहुत सारा रिपोर्ट्स आगे पीछे, टाटा हॉस्पिटल, यहाँ से ओपिनियन, यूएस से ओपिनियन, सब होने के बाद करीब 4 या 6 महीने के बाद आपका इवेंचुअली ट्रांसप्लांट हुआ. उसकी सिस्टर उनकी डोनर थी. एंड you can see her, how well she is. It's almost 3 years now post transplant. And Simran, a few words from you.
So it was really a wonderful meeting Dr. Jatin Kothari during one of my dialysis time. Previously, I was taking dialysis with under some other doctor. So suddenly one day my husband told me, oh, I think he's one of my college friend. And then he just sent a card to him and he immediately called us in the cabin. And then we met, like in this way, we met Dr. Jatin Kothari. And after that, like my life has been really been a miracle to me. He has helped me in a lot of way in coming out all of this. So my transplant happened last 3 years back. And after that, I've been really good under Dr. Jatin supervising. Thanks to Dr. Jatin Kothari. Thank you, Silvia. We'd invite Dr. Bichu to felicitate Simran. All the best. Thank you. Let me call upon the next patient. Is Akash here? Akash Bansali? Please. Okay. Let's call upon the next patient. Isidore Raskina. Please come, Mr. Raskina. Mr. Raskina takes dialysis at Sushruth Center. Vishwanath, maybe you can. No problem, we'll come there. I request Dr. Billa to felicitate him where he's sitting. Vaishali. Let's move ahead and call some of our people who are in the background, who never come to the fore. They are our donors and our support for the Apex Kidney Foundation. First of all, Mr. Sanjay Kothari, sitting here, right here. Sanjay Kaka is my dad's first cousin. How, Kaka? And during the COVID period, as we shared over the last hour or so, we faced a lot of challenges. And I called up Sanjay Kaka one day and said, Sanjay Kaka, I need your help. We are wanting to start a dialysis center in Cooper Hospital. This is a municipal hospital. All of you know Cooper Hospital, I hope. वहां पे हमको एक डायलिसिस सेंटर चालू करना है, जहां पे हमको कोविड पेशेंट्स को डायलिसिस करना है और उनको फ्री ट्रीटमेंट देना है. हमने कॉर्पोरेशन को अप्लाई किया. कॉर्पोरेशन से हमने करीब 10 से 12 दिन में उसका टेंडर का रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करके वो सेंटर हमने चलाने के लिए आगे लिया. और हमको जरूरत थी डोनर्स की, जो हमको मशीन्स डोनेट कर सकें, क्योंकि कोविड में, जैसे डॉक्टर बिल्ला ने बताया, अगर आप कोविड पॉजिटिव हैं और आपको डायलिसिस करना पड़ता है तो हम वो फिल्टर बार बार यूज नहीं कर सकते. डायलिसिस का कॉस्ट बहुत ज्यादा है और उसमें हमको जरूरत थी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन आगे आकर के हमको मशीन्स फ्री दे और हमको सपोर्ट करे. उसमें सिर्फ 2 फोन कॉल में संजय काका ने मुझे बोला कि मैं हमारे जेम एंड ज्वेलरी ट्रस्ट को के बोर्ड में ये प्रस्ताव रखता हूं, और 3 दिन के अंदर उन्होंने कमिटमेंट दिया कि वो 6 मशीन हमको फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी एडवांस डॉक्यूमेंटेशन, ज्यादा कुछ हमारे पास था नहीं, हमारे पास यही था कि हमको कोविड पेशेंट्स को सपोर्ट करना है. इसके लिए संजय काका आगे आए और मैं शुक्रगुजार हूं उनके पूरे ट्रस्ट का. संजय काका, फ्यू वर्ड्स फ्रॉम यू. Good afternoon. It has been a pleasure to be here, Dr. Apex team. My compliments to the founders of the Apex Kidney Foundation and the team who has been working since last 15 years relentlessly. My association with Apex has been taking back to Palanpur, where we have been running an Apex center in Parikh Hospital along with them. And now when he called me for this, I am a part of the organization, which is a charitable organization of our industry. And when he called me, I said that this is a noble cause which they have been doing. And immediately the board also agreed. And Lakshmi and Saraswati both go together.
But Saraswati is his main thing, which Lakshmi will come after if the people are doing good, noble work. Doctor, my compliments to you, compliments to the founders of the Apex Kidney Foundation and all the warriors. It has been an eye-opener for me to be here. Thank you so much. Thank you. Request Rupen Kaka to felicitate Sanjay Kaka, please. Thank you. Mr. Ravi Goenka? He's not. He's in Europe. Okay. Mr. Sunil Velankar? So just a few words on, oh yes, Sunil is here. Sitting quietly. Yeah, please, please. Shri, you take over. शशांक साहेब तुम्ही दिसत नाहीये. अरे जरा पुढे या प्लीज. कधीतरी आम्हाला ऑपॉर्च्युनिटी द्या काय करायला. श्रीरंग, you'll have to speak. These three gentlemen represent Prabodhan Trust of Mr. Subhash Desai, and they are running dialysis center which gives free of cost dialysis to hundreds of people. Mr. Satish Wagh is an entrepreneur, he is an industrialist, and he recently, his company has launched IPO which has created records, isn't it? Akash Bansali was here, he just left. He would have loved to hear that. And Sunil Velankar and Shashank Kamath, they are the pillars of his trust, and all of them work together and help kidney patients as much as they can. So, Wagh sahib, thoda sa tumhi bola. Good afternoon. Good afternoon. First of all, I thank Dr. Bichu for calling me. Let me tell you, I am a businessman, run a pharmaceutical industry of API, and in the industry for last 35 years, first generation entrepreneur. Created this company for almost 35 years and launched an IPO on 21st of December for 700 crores, and it was 87 times oversubscribed in India. Besides that, I take a privilege of 37 billion exports of this country on an export promotion body called Chemaxil for last 24 years. I thank Dr. Sri Subhash Desai ji. He made me a vice president on the organization called Prabodhan. Unfortunately, due to my business schedule, I never got time to go with Sunil Velankar and Shashank Kamath to see our dialysis center. Now I will tell you how I got associated with Mr. Bichu. Now, Bichu was getting felicitated by my community and we were together on the forum. Now I am also a part of your Apex Center because there is an incident happened in my family. I have a niece who is hardly 32 years. And because of the pandemic corona time, she used to take continuously some tablets which was giving her pains. And finally, the result happened that there was a failure of the kidney. Dr. Billa, I never met him, but he is taking care of my niece, that is Prajakta Asgaonkar. She stays in Santa Cruz. So I came first with her to meet you in Chembur. So let me tell you now, I have also fantastic philanthropic ideas. I'm sitting with a huge cash. I fall under HNI category. For me to live is hardly 1 lakh rupees per month. That's my expenses. But I definitely want to do something for the society, which I have been doing for the poor people, students, their fees, some medical expenses. I can assure you a certain amount of money, large, can be given to
people like Dr. Vinayak Bichu, which can definitely, at least minimum, give dialysis to 10,000 people per year, free of cost. After meeting you here, see, let me tell you, my half of the life has gone in a place called Chiploon, where I have been in the industry for 35 years. I would like your help to get a small dialysis center set up in Chiploon so that I can also do something for my society, because this Chiploon village is covered with almost 35-40 villages. They are absolutely poor people. And whatever I have, it's my fundamental thing, which my parents have told me that I should give something to the society, and I'm sure I will do that. Thank you very much for giving me time and calling me here. I request Srirang to felicitate all the three members here who have been a big part of our efforts of providing dialysis at a charitable center. Prabodhan is doing amazing work. In the interest of time, we won't be able to hear from Sunil, but you should stay in touch with Sunil and just listen to him about what the overall work that they've been doing at Prabodhan for the last 40 years. So thank you very much for being a part of this function. Thank you. Thank you. Please. Thank you. Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Actually, this center started 7 years back. This is the idea of Subhash Desai, who was industry minister few months back. And we have started this center with Apex Kidney Care, Srirang Bichu, Rajesh Kumar, Jatin, Rajesh is there. Rajesh is the main pillar. He come very frequently there. Every week he is there. Vaishali also. And I will tell you, we started 1st October 2015, and till date, we have not closed our dialysis center for 1 day. And this credits goes to Apex Kidney Care. And in the Corona time also, Desai Saab also came to the center and asked me, did you want anything? Do you want to organize some more thing? I said, no, I already organized and we are well organized. And Apex staff was staying in Goregaon for almost 7 months, which is not a joke at all. So hats off to this team. We'll work together. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Shashank. Mr. Suresh Agarwal here? Can't see him. Let's call on some more patients, our warriors. Gangadhar Bhupeli. Is Mr. Gangadhar here? Yes. Aye, please, aage aye. Dr. Vaishali to felicitate Mr. Gangadhar, please. Next. Yeah, I'll call Mr. Jamdar. Yeah. Thank you, Mr. Gangadhar. Thank you. गंगाधर साहब सुश्रुत डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस ले रहे हैं कितने साल से? 14-15 साल से. थैंक यू. थैंक यू. ओके, नेक्स्ट मिस्टर जामदार, इज ही हियर? Request Mr. Jamdar to come forward, please. Srirang, if you can just speak a few words. Their son was a dialysis patient. Unfortunately, we lost him in COVID. But for many years that he was on dialysis, 10 years that he was on dialysis, he was paralyzed and he was coming on wheelchair right from birth. And why we have today called Mr.
Jamdar and Mrs. Jamdar. This boy was an inspiration to all, to the fellow patients, to technicians, to doctors. What a cheerful person he was. Whenever he used to come for dialysis, he used to fill the entire atmosphere with cheer. Always talking, laughing, although he had all these difficulties in life. And he had great belief in God. He used to go to Shirdi often to pray. And Mr. Jamdar, Ullah Jamdar, he has left his political career to take care of his. Otherwise, he was at the same level as Mr. Eknath Shinde at one point of time in Shiva Sena. But he left it. He does social work, but he left active politics at that point of time. Mr. Balasaheb Thackeray had called him personally, you don't do this, you continue and you will go maybe he would have been, if not the chief minister today, he would have been in the cabinet ministry, but he has not, he has left all that. After the death of his son, and even during that, he used to help a lot of patients. And he worked very hard day and night to get 3 dialysis centers started in Kalyan Dombivli area, which are completely free. So that is the reason we thought that we should felicitate the parents of the child who have worked so hard to keep him happy all the time. I remember when Yogesh was unwell, he was in the COVID ward. I was there personally and he was on video that time. And we were just going to intubate him because he was not able to breathe well and he did machine. And that was his last time. And even at that time, he said, Doctor, tumchor sapurna vishwas hai, he with a smile on his face. And his father was a witness to that. So such was our Yogesh. I would want you to talk. Thank you, sir. At the onset, let me congratulate the entire Apex Kidney Foundation for doing such a wonderful thing. As sir had rightly said about my son, our son, he was a cheerful person, but today when I saw the warriors who are still fighting the battle, initially when we got the invitation, I thought, why should I go? These are warriors who are living. But then I said, no, he fought the entire life fighting as a warrior. And he used to boost everybody, even patients, even us as parents. Initially, I used to feel, why us? Why we have been given such a child? What sin have we committed? But then I realized he was a blessed child for us. Today also this opportunity what we got is because of him. Had we not got such a child, nobody would have known us. So I feel really blessed to have such a child with me. He was an inspiration to both of us. And he used to tell, Mommy, you don't come to dialysis. You will not feel nice doing all the, the pricking thing, all those things you will not be able to see. So I said, okay, beta, I will not come. But every day was a challenge for us. Whenever he was on dialysis for thrice a week. Whenever he used to come back, it was a challenge for us, at least for me. How he would be coming, what would be his reaction after dialysis. So actually, I don't want any sympathy for my son here. I am not coming here for getting any sympathy. But I would like to share some good things about him. He was an inspiration. And he used to celebrate his birthdays everywhere. Though he could not walk. Today, had he been with us, if he was able to walk, or even if it was in his wheelchair, we would have 100% brought him here. He was with us every time. Wherever we used to go, sir was there to witness that also. We used to bring him everywhere where we could bring him. And the way he socialized, and he used to pacify other persons who were really in trouble. Nahin, kuch nahi hoga. Don't worry, God is there. And even when he was sick, nahin, main wapas aunga. And he had been done that fistula. First time when he was done, I was really shocked. I didn't want to see that because I don't know what was that fistula and all those things.
So then whenever, after fistula also, he used to, whenever he has BP, he had multiple problems with him. But when you see him, this is my son's photo. If you see him, you would not see a pinch of sadness on his face. So he was really happy and, smiling every time. And seeing everybody, whoever comes to him, we used to celebrate his birthday every year in our house. Even after his demise also, we are celebrating. So whenever people used to come to our house, he used to be a source of inspiration. Sitting at one place, and he used to live with a mobile and a TV with him. And no complaints at all. Seeing that, I was also surprised. Never ever did he complain in his life, why am I like this? What have I done? Why God has done this? Never ever complained. That made me more painful. But then he was happy with what he had. Ready for the dialysis every time, thrice a week. Ready, come on. Papa, you're coming now for taking me to the dialysis? If this Papa was ever ready to take him there. So that was Yogesh. And he was a really blessed child, and I thought God had given me such an opportunity that he had done. We had got an opportunity to do this service for my child. It was a social service, community service, and a parental service for my child. So we were really blessed to have such a wonderful child with us. If ever he was, and I'm sure that he is there with us even right now. This is what we want, that he is there with us and he sees everybody. And whenever we went to Dr. Bichu sir was really support for us, totally moral support, whatever it is, the way he talked with the patient, really admirable. Never ever he made us feel that he was a liability for us. Never ever. Whenever we took our son to sir used to talk so nicely to him that it made Yogesh to be more successful in life. All positivity was seen in sir's chamber whenever we went. So that was Dr. Bichu. And every now and then he used to monitor us. Yes, how is Yogesh? And Yogesh was also like a friend to sir. He didn't treat sir as doctor. Sir, kaise hai aap? How is your life? Fine. Acha hai na? Bhabhi achi hai na? Everything. He was so nicely, he was talking even with, I think, ma'am also he had met once. So he was like a family person to them. So then I felt, why not go to the function and share my bravery of my son here? Why not? Why should I? And I could see all the persons who are really warriors because they are facing different challenges. But all could walk and come through. But alas, my child was really, he was physically challenged child. He could not come. But with his face and his smile and his energy, you could never ever see such a child in anybody's life. That is what I felt. And God had all his rights. He had, and when Corona also came, he used to tell, अरे कोरोना आ गया, कितने जन को लेके जा रहा है, कितने जन को लेके जा रहा है. But we never ever imagined that Corona would ruin our life like this. Just when he was admitted, 2020 he was admitted, 20, yeah. So he was 28th August he was admitted. 2nd September we lost 2020, and that time the Corona had reached peak. That was the September was that month where maximum death could witness. And we are coming all the way from Kalyan, and Apex Kidney Center was also there. Very nice staff, very nice technician. They used to talk with Yogesh so well that he didn't understand the pain. And even this fistula, every now and then he used to tell, he used to touch and see whether it is working or not. Something happens to his hand, he used to touch and see. है ना, चल रहा है ना? Then I used to ask, what happened, Yogesh? नहीं touch कर रहा हूँ कि चल रहा है कि नहीं. He wanted to live life. He never ever lost hope. He told, no, I want to live more. With all the pains in life, he said, no, I want to lead a successful life. तुम लोग दुखी मत होना. He used to always be an inspiration for his father. He has done a lot for his son. Carrying him to the center, leaving his job aside, taking so many things he had done. And that was, we felt as parents, we are really blessed. And this opportunity, thanks to the entire team for inviting us, where we could speak something for our son, not for sympathy at all, but that he was really a brave boy. And I congratulate all the warriors over here. Exactly, this function is also, they are warriors in life, not only for themselves, for their parents, friends and relatives, and also an inspiration for the doctors. It is a challenge for them. So thank you once again, all of you. Thanks a lot. Thank you. Agarwal. Thank you. Thank you. Thank you.
योगेश म्हणजे त्याचं लाईफ जे आहे ते 25 वर्षाचं होतं. 10 वर्ष तो डायलिसिसवर होता. पण हे करत असताना तुम्ही जर जनरली बघाल डॉक्टर, आपल्याकडे भारतामध्ये आपण जेव्हा किडनी पेशंट म्हणून जातो कुठल्या डॉक्टरकडे, तर त्याला प्रॉपर डायरेक्शन मिळत नाही. म्हणजे मला जो एक्सपिरियन्स आला, म्हणजे चांगल्या मोठ्या हॉस्पिटलचा, म्हणजे आमच्याकडे त्यावेळेला वोकाड होतं, नंतर ते हे झालं, वोकाडचं नाव फॉर्टिस झालं. तिथे एक मोठे नेफ्रॉलॉजिस्ट होते महाशय. त्यांनी एक दिवस चेक करताना आमच्या त्या सिस्टरला सांगितलं, म्हणजे मला त्यांनी लॅसिक्स लिहून दिल्या, दिवसातनं 3 वेळा घ्या. म्हणजे बघा माणसाची प्रवृत्ती कशी असते. सगळेच डॉक्टर सारखे नसतात, पण एका डॉक्टरमुळे अख्खी फॅकल्टी खराब होते. त्यांनी सिस्टरला सांगितलं, इसका पापा के पास कितना पैसा होगा, इसको अपन ट्रांसप्लांट पे ले जा सकते क्या जल्दी से जल्दी. मला तो प्रश्न पडतो की अशी माणसं आहेत समाजामध्ये, म्हणजे चांगली पण आहेत आणि वाईट पण आहेत. शेवटी मला त्या सिस्टरला रागवलं नाही, तिने मला सांगितलं. मी शेवटी त्यांना सांगितलं, मी काय, शेवटी मी हाडाचा शिवसैनिक आहे. त्याला म्हटलं, तुझी गाडी आहे ना, ते दुर्गाडीच्या किल्ल्यातनं ब्रिजवरनं खाली टाकेन साल्या. म्हणजे अशी लोक पण आहेत. माझी एवढीच एक विनंती आहे की ज्या वेळेला एखादा पेशंट येतो ना आपल्याकडे, सर, आपल्याकडे अजून प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर नाही आहे. आज कल्याणचं उदाहरण देतो. जेव्हा कोविड स्टार्ट झाला, कोविडमध्ये डायलिसिस पेशंटला पण कोविड होतं हे कोणाला माहीत नव्हतं. म्हणजे ॲडमिनिस्ट्रेशनच्या ते लक्षात आणून दिलं. आमच्या कमिशनरशी बोललो की सर, डायलिसिस पेशंटला कोविड झाला तर ट्रीटमेंटला आपल्याकडे मशिनरी नाही आहे. आणि ते लक्षात आल्यानंतर मग कुठे ती सुरुवात झाली. त्यावेळेचे आमचे जे काय पालकमंत्री होते, खासदार होते, त्यांच्या मागे लागलो आणि जवळजवळ त्यांनी मला 3 कोटीचा निधी त्यावेळेला दिला. आज कल्याणमध्ये म्हणजे मला इन्स्पिरेशन कसं मिळालं की माझ्या मुलामुळे मिळालं की मी करू शकतो, पण जे करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी आपण काय करू शकतो. मग मी बिच्छू सरांशी बोललो, कमिशनरांची भेट घेतली आणि आज तिथे 3 सेंटर आम्ही चालू करतोय. एका सेंटरचं उद्घाटन आदित्य साहेबांनी केलेलं आहे तिथे येऊन, आणि आणखीन 2 उद्घाटनं करायची बाकी आहेत. पण त्यांनी त्यावेळेला तो निधी दिला डॉक्टर श्रीकांत शिंदेंनी. पॉलिटिक्स अपार्ट, आपल्याला इथे आजार म्हणून बघायचं आहे. आता इथे आमच्यासमोर वाघ सर पण आहेत, जे मला वाटतं देसाई साहेबांशी असोसिएटेड आहेत. आणि त्यावेळेला आमचे डोंबिवलीला पण एक जी चिदानंद ट्रस्ट आहे, सुदीप साळवी बघतात, ते ब्लड कॅम्प आहे, हे ब्लड बँक आहे. तर मला असं वाटतं की सर, आपल्या माध्यमातून पण आपण कल्याण डोंबिवलीसाठी आपण काय करू शकलात तर जरा देसाई साहेबांशी बोला, आम्ही पण बोलू. पण जास्तीत जास्त लोकांना ही ट्रीटमेंट दिली गेली पाहिजे, कारण सगळ्यांना अफोर्ड करू शकत नाही आहेत. आज इथे आपण बसलेलो आहेत, काही टेक्निशियन आहेत, काही लेबर आहेत, पण काही इंडस्ट्रियलिस्ट पण आहेत. पण हा रोग काय सांगून होत नाही कोणाला, की कुठल्या इंडस्ट्रियलिस्टलाच व्हायला पाहिजे असं नाही आहे. एखाद्या सामान्य माणसाला पण होतो. पण ते होत असताना जर आपण ती काळजी घेतली तर खूप चांगलं होईल. ॲपेक्स किडनी फाउंडेशनच्या माध्यमातून आज जे कल्याण डोंबिवलीमध्ये होतं आहे, म्हणजे कल्याणचं सेंटर आहे, तिथे मी 2010 पासून ट्रीटमेंट घेतोय मुलासाठी, त्यावेळेला घेत होतो. तर आत्ता ज्या नवीन सेंटर्स होत आहेत त्यासाठी जी काय मदत लागेल त्यासाठी मी तिथे असेल, आपल्यासाठी पर्सनली मदत म्हणून. आणि आणखीन भविष्यात काय आपल्या ज्या काही योजना असतील त्यासाठी माझं पाठबळ असेल. जय हिंद, जय महाराष्ट्र. Thank you, Jamdar Sahib. Now invite Mr. Agarwal. Mr. Surendra Agarwal is here. Mr. Surendra Agarwal, is he here? Surendra Agarwal, Ravi Goenka, and you please, and Mona Mehta, all 3 of you please come. Please. Come. Why are you hesitating?
So Thank you, sir. Thank you very much. I have called them together because of want of, we have less time. All three of them know each other, and that's the reason I have called. He and his dad, Mr. Purushottam Agarwal, who we lost last year. So all of them are very strong supporters of Apex Foundation in various ways and Apex Kidney Care. His sister Madhuri Agarwal is not here, so and Mr. Surendra Agarwal, her husband, is here, and we thank both of them. And Mrs. Mona Mehta is also a big support to the foundation and to Apex. Her husband is Sanjeev Mehta, who is chairman of Hindustan Unilever, Asia and South Asia. Asia and I don't know exactly, but so they have taken time out from their busy schedule to come, and we thought it's apt to felicitate them here. Thank you. Thank you. Please. Srirang, if you and Vaishali can, please. Thank you. Thank you for coming, and thank you. Next, I would call. Thank you. Both have been very, very inspiring. Thank you. Thank you. Thank you very much. Next, I would invite Mr. Milan Parikh and Archana Parikh. They represent the Mahendra Brothers Foundation. Milan Bhai is also my cousin, and I'm very happy that Milan Bhai and Archana Bhabi have come here. Just like I mentioned about Sanjay Kaka, one other person that I always take guidance from and take inspiration from is Milan Bhai's father, who's my uncle, Mr. Kavin Parikh. They have a huge business globally, and one thing which I admire about them is their thought about philanthropy. And philanthropy is a thing that is ingrained in the entire Parikh family. So I'm very thankful that Milan Bhai and Archana Bhabi have come, and it's our privilege to felicitate them. Rupen Kaka? Papa, oh. My father is here, so you can come. Thank you. અહીંયા ઉલટા આમ આવો. My uncle would have always been here for these kind of events, but he's not keeping too well, so all the best. Thank you. Thank you, Milan Bhai. Time to invite a few more of our warriors before we see some videos, because some people have not been able to come for this event, so we will see few videos before we break for lunch. Yeah. Would not forget them for sure. Let's call some of the other patients who have come here. Kamlabai Sagar from Lalbagh Center. I saw Dr. Bichu taking Kamlabai's hand and getting her here inside this auditorium. She's a huge dialysis warrior. She has been at Lalbagh Center for the last 10 years. She takes dialysis at Lalbagh Center. At Lalbagh, which is free, Lalbagh Sa Raja Ganpati, you must have heard about. So she takes dialysis, ये dialysis लेते हैं लालबाग का राजा ट्रस्ट में, डायलिसिस सेंटर में, और अभी कितनी वर्ष चले? 14 वर्ष झाले मी अपेक्स मध्ये डायलिसिस घेते. If you start, you will start and she will entertain you for half an hour. So I have to keep control. I have to. So the important thing is that अकेला पनवेल से ट्रेन से आती है और लालबाग में डायलिसिस लेती है. ऐसा 14 साल चल रहा है, एक डायलिसिस मिस नहीं किया है और एक बार भी एडमिट नहीं हुई है. उधर से आती है दादर तक, उसके बाद बस पकड़ के आती है. और आज भी, कल भी मैंने फ़ोन किया था परसों कि आपको आना है, तो बोले कि हाँ मैं 11 बजे आने का है, मैं 8 बजे उठती हूँ
फिर उधर से ट्रेन पकड़ के दादर में आती हूँ, दादर से कुर्ला आती हूँ बस से, और उधर मुझे समझेगा नहीं कोई आएगा, बोला कि नहीं आपको आज नहीं आना है, डायलिसिस के लिए नहीं, हम सब इंतज़ाम करेंगे घर में, कोई आके पिकअप करके इधर आएगा और लेके जाएगा आपको. तो सच इज और कमला भाई. पण एकच मिनिट हा, एकच मिनिट राहून दे. नंतर डॉक्टर बिच्छूशी बोल. थँक्यू थँक्यू. Mr. Sandeep Pandey, please come. Mr. Nitin Bangar. Nitin is on Zoom. Mr. Amit Motwani. Please आगे आइए. अमित आइए. Shri, few words for them. Is Sandeep. So Sandeep was he has got transplanted. तो ये जब ट्रांसप्लांट हुआ तब जस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था, किसी घर में पैसा नहीं था ये ट्रांसप्लांट करने के लिए, तो सपोर्ट से ट्रांसप्लांट हो गया उसका. बाद में कंप्लीटेड ग्रेजुएशन. नाउ एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम उनको इंटरनेशनल फोरम में रिलीजन के बारे में, हिंदुत्व के बारे में बात करने के लिए इनवाइट किया जाता है. होप में इसकी मुलाकात की और ये एकदम वेदांत में, उपनिषदा में एकदम परफेक्ट है. जो भी और उसके ऊपर बहुत स्टडी किया है. और अभी म्यूनसिपल स्कूल में उसको काम करना है टीच करने के लिए, इसलिए उन्होंने बहुत कोशिश करके म्यूनसिपल टीचर बन गए हैं. तो आप बात करो. Respected doctors, professors, a little bit tall, professors, my dear kidney warriors, and my brothers and sisters. हिंदी में सुनाई, हिंदी में सुनाई. हाँ, माझा नाव संदीप पांडे आहे आणि मला मुझे मराठी बोलने में बहुत गर्व होता है कि यूपी वाले हैं तो मराठी बोलते नहीं हैं, बट हम मराठी सिखाते हैं स्कूल में. और प्लीज गो अहेड. जब मैं 24 साल का था तो ऐसे ही मेरे सीने में दर्द चालू हुआ, तो किसी ने बताया कि बॉम्बे में बिच्छू सर है, आप जाके उनको मिलिए. बट मुझे ये नहीं पता था कि मैं एक भगवान को मिलने जा रहा हूँ, बिकॉज इन्होंने जो मुझे सपोर्ट किया, इन्होंने कहा कि संदीप क्या कर रहे हो. सर मेरा भी बीएड का सेकंड टर्म है, मुझे क्लियर करना है, मुझे टीचर बनना है. तो सर ने कहा कि हम आपका एग्जाम बाद में करवाएंगे, आप पहले, आपका किडनी दोनों फेल है. तो हमको पता नहीं था किडनी फेल मतलब क्या होता है. तो एक दिन पराग सर आए थे जो यहाँ बैठे हैं, उन्होंने कहा कि आपका ये रिपोर्ट्स है, आपका क्रिएटिन 24 है और आपके दोनों किडनी फेल है. तो एक दिन सर आए थे, तो मैंने कहा कि ठीक है किडनी फेल है तो हम लगवा लेंगे. तो हमको पता नहीं था कि, हम ये हंसी में लेते, हमको पता नहीं था कि किडनी लगवाना कितना बड़ा बात है और कितने लोग जुड़े हैं एक किडनी के पीछे. तो इनके लिए मैं एक बार कहूँगा कि आप जोरदार तालियां बजाएं, क्योंकि ये है तो आज वॉरियर्स है और ये इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा है. और जैसे कि मैम ने कहा कि किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद हमें होप नहीं छोड़ना है, तो आई वॉज ग्रेस कि मेरे माताजी, मेरे पिताजी, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया, इस काबिल बनाया कि मैं वो एज 24 के बाद आगे कुछ बन सकूं. और जैसे कहते हैं कि हर पुरुष के पीछे एक महिला का हाथ होता है, तो ट्रांसप्लांट के पहले मेरी माँ का हाथ था और ट्रांसप्लांट के बाद मेरी वाइफ का हाथ है जो यहाँ पे बैठी है. जब मैंने उन्हें फर्स्ट टाइम मिला तो मैंने कहा शादी से पहले कि मेरा दोनों किडनी डैमेज था तो हम शादी कर सकते हैं. उन्होंने कहा कि दैट इज योर पास्ट. संदीप उनको बुलाइए, उनको आगे प्लीज कम. तो मैंने इनसे कहा कि मेरे दोनों किडनी फेल है कि आप शादी करोगी. इन्होंने कहा कि वो आपका पास्ट था, हो गया. आज मेरे सामने संदीप पांडे ऐसा टीचर खड़ा है एंड शी एक्सेप्ट मी. तो थैंक यू सो मच फॉर दैट. और आज मैं यहाँ पे बीएमसी स्कूल में टीचर की से कार्य कर रहा हूँ. मैंने वेटिकन सिटी रोम इटली में भारत से जो 9 लोग थे उसमें से मैं एक था, और महाराष्ट्र से मैं अकेला था जिन्होंने हिंदू रिलीजन पे थोड़ा स्पीच दिया, हमारा कल्चर क्या होता है वो बताया. और लॉट्स ऑफ एक्टिविटीज में मेरे लोकल एरिया में वसई में करता हूँ. आज मेरा स्कूल माजगांव में है, मैं वसई से माजगांव एवरीडे 4.5 घंटे का ट्रैवलिंग करके जाता हूँ. और मुझे खुशी होती है कि मैं आज इस काबिल हूँ कि मैं लोगों को बता सकता हूँ कि अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो घबराने की बात नहीं है, ये हमारा सेकेंड इनिंग है.
और हमें यहाँ पे भी सेंचुरी मारनी है. Fantastic. So thank you so much. Thank you. for Thank you. giving Shri, this- if you can felicitate him, please come. Thank you very much. God bless. Thank you. Thank you, sir. अमित मोटवानी, अमित आइए आगे. आप सोच रहे होंगे ये वॉरियर्स की लिस्ट खत्म क्यों नहीं हो रही है? अभी ये डॉक्टर अमित, तो जब उसका तो किडनी फेलियर हो गया तो मेडिकल स्टूडेंट था और आगे क्या करने का, क्या होएगा, स्टडीज़ का क्या होएगा मालूम नहीं. ऐसे सिचुएशन में उन्होंने डायलिसिस शुरू किया और रिसेंटली उसका ट्रांसप्लांट हो गया. माँ ने दिया है किडनी. और मैंने इसको इधर क्यों इनवाइट किया, क्योंकि अब कोविड में सब डॉक्टर्स घर बैठते थे, लेकिन ये किडनी फेलियर होने के बावजूद ही वॉज वर्किंग डूइंग हिज इंटर्नशिप. मुझे उसके बाद किडनी ट्रांसप्लांट हो गया. किडनी ट्रांसप्लांट के बाद क्या होता है कि बॉडी का इम्यूनिटी कम कर देते हैं, इन्फेक्शन होने का चांस ज़्यादा होता है, तो उसको और भी खतरा है इन्फेक्शन का. लेकिन उसी टाइम MBBS तो ख़त्म हुआ था, अभी आगे बढ़ना है. तो एंट्रेंस दे के MD को उन्होंने एडमिशन ले लिया. बहुत टफ एंट्रेंस होता है, ओनली द ब्राइटेस्ट ऑफ पीपल गेट इनटू. सो इतने मेरिट पे उनको MD का सीट मिल गया. और वो भी पहले किधर मिला था? मध्य प्रदेश में मिला था. तो कोशिश करके उन्होंने ट्रांसप्लांट पेशेंट है ये करके बॉम्बे में उन्होंने ट्रांसफ़र करके लिया. और अभी मेडिसिन में सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है कैजुअलिटी में काम करना, इमरजेंसी में काम करना पड़ता है, ICU में काम करना पड़ता है. तो इन्होंने मुझे एक बार पूछा कि मुझे बहुत इच्छा है काम करने की, आई वॉन्ट टू वर्क हियर, तो व्हाट इज़ द रिस्क? बोला रिस्क तो है, यू हैव टू डिसाइड. देयर इज नो प्रॉब्लम वर्किंग बट रिस्क तो है. ही सेड आई विल टेक द रिस्क एंड आई वांट टू वर्क. And he loves working in emergency department. He loves working in ICU. इसीलिए मैंने उसको बुलाया. Congratulations, Amit. Yeah. 30 seconds. Hello. I'm now Dr. आपको तो प्रेशर में काम करने की आदत है. चलेगा सर. Good. So I'm Dr. Amit Motwani. I am currently at MBBS from Government Medical College, Meerut. सो उसके बाद फर्स्ट मेरे को एक्सीडेंटली HIV पेशेंट का मैं सैम्पल कलेक्शन कर रहा था, बट वो विदाउट कलेक्शन, विदाउट डोज, विदाउट ग्लव से मैंने कलेक्ट किया था. उसके बाद मेरे को एक्सीडेंटली उसका ब्लड लग गया था, तो फिर मुझे बहुत डर लग गया था. तो मैंने एक उसका पोस्ट प्रिवेंशन लाइक HIV नहीं हो मुझे, तो मैंने मेडिसिन लिया था. उसके लिए मुझे एक वो मेडिसिन लेने के पहले मुझे अपना किडनी एंड लीवर एंड ऑल फंक्शन चेक करना इज़ इंपॉर्टेंट. तो इसके लिए मैंने किडनी का चेक करवाया. तो एक्सीडेंटली आई केम टू नो दैट माई क्रिएटिनिन इज 3.7. सो उसके बाद मैं बहुत डर गया था, तो मैंने लोकल नेफ्रोलॉजिस्ट से बात किया था वहीं पे मीरज में एंड ऑल. और फिर वहाँ से मैं यहाँ पे आया. मेरा हिस्ट्री था एक्चुअली प्रीवियसली रिकरेंट यूरिन इन्फेक्शंस का. तो उसके बाद फिर मेरा यहाँ पर मैंने जब भी आया बॉम्बे में ट्रीटमेंट के लिए, तो मेरे को किसी ने बताया कि श्रीरंग बिच्छू सर है जो नेफ्रोलॉजिस्ट है यहाँ पर, बॉम्बे हॉस्पिटल इज़ वेरी नाइस. तो मैं वहाँ पर उन्होंने कंसल्ट किया मैंने, और मेरे को उनका बिहेवियर एंड और पर्सनैलिटी और बस लगा. बहुत अच्छे से समझाया उन्होंने मुझे कि दिस इज़ ऑल पॉसिबल, यू कैन गो अहेड विद द स्टडीज़, हम लोग तुमको हेल्प करेंगे पूरा, फुल सपोर्ट यू. उसके बाद फिर मैं बहुत खुश हो गया एंड ऑल. फिर मैं स्टार्ट किया स्टडीज़ रिलेटेड. मैं पढ़ाई भी किया, MBBS भी किया. MBBS तो कंप्लीट हो गया था. उसके बाद फिर मैंने एंट्रेंस दिया, छोड़ा नहीं मैंने एंट्रेंस देने. एंड फिर MD का लिए ट्राई किया, बट मुझे MD नहीं मिल पाया क्योंकि मेरा रैंक इतना अच्छा नहीं था. बट स्टिल मुझे DNB मिला, डिप्लोमा नेशनल बोर्ड. तो उसमें फिर मुझे और करना भी मुझे फिजिशियन का ही था, कि मुझे फिजिशियन में इंटरेस्ट था. तो मेरे को अल्टीमेटली किधर तो भी लास्ट राउंड में मुझे पॉपअप राउंड में मुझे मिला 2019 में DNB मेडिसिन मिला, वन ऑफ द इंस्टीट्यूट्स इन दी मध्य प्रदेश. उसके बाद मैं बहुत खुश हो गया, लाइक मुझे मिला एडमिशन. फिर बट वहाँ पे मेरा डाइट चेंज हो गया, लाइक प्रोटीन रेस्ट्रिक्शन नहीं कर पा रहा था, मेरा क्रेटिन ऑलरेडी रेस था. तो आफ्टर 4 months लाइक मेरा फ्लूइड ओवरलोड हो गया था बॉडी में. सो अगेन डॉक्टर के पास आया, मैंने कंसल्ट किया बिच्छू सर से. तो ही एडवाइज टू स्टार्ट डायलिसिस एंड गो फॉर द ट्रांसप्लांट प्रोसेस. बट माई मदर रेडी थी डोनेट करने के लिए एंड ऑल. प्रोसेस हो ही गया था, 3-4 months का प्रोसेस था, वो हो गया था पूरा.
मार्च में 2020 में, बट कोविड एंड ऑल आ गया, तो कोविड की वजह से मेरा ट्रांसप्लांट कैंसिल हो गया, डिले हो गया, तो मुझे डायलिसिस करना पड़ा फॉर 1 ईयर। उसके बाद फाइनली मुझे चांस मिला एक जनवरी 2021 में कि मुझे लाइक मिल जाए, मुझे ट्रांसप्लांट का वर्कअप किया 2021 में, फिर मिल गया मुझे जैन 2021 में ट्रांसप्लांट हो गया मेरा फाइनली। उसके बाद मैंने 6 मंथ्स एंड ऑल पोस्ट ट्रांसप्लांट मेरे को, और हाँ नवंबर 2020 में एक था एक लाइक मेरा जो फास्टर माय इंस्टीट्यूट वाज डी रिकॉग्नाइज्ड, जो मेरा इंस्टीट्यूट था प्रीवियस वाला वो डी रिकॉग्नाइज हुआ, तो उन्होंने मुझे लाइक ट्रांसफ़र किया ऑन दी सर के एक लेटर की वजह से। उन्होंने लेटर लिख के दिया कि यू रिक्वायर लाइक यू कैन गेट ट्रांसफ़र नियर टू बाय होम ऑन ह्यूमैनिटेरियन बेसिस। तो मुझे यहाँ ट्रांसफ़र मिल गया बॉम्बे में जुपिटर हॉस्पिटल में, तब से मैं वर्क कर रहा हूँ जुपिटर हॉस्पिटल में। लाइक जुलाई में पोस्ट ट्रांसप्लांट 5 मंथ्स मैंने रेस्ट लिया, फिर 6 मंथ्स मैंने फिर ट्रांसफर में ज्वाइन हो गया जुलाई 2021 में। थैंक यू अमित। सॉरी, इन द इंटरेस्ट ऑफ टाइम वी हैव टू try and speed up the things, but all the best to you, and Dr. Bichu is the right person to felicitate you. Thank you. हर वॉरियर की एक स्टोरी है। नेक्स्ट, मेरे हिसाब से जो पेशेंट्स को इनवाइट किए थे वो वॉरियर्स खत्म हो गए, पर एक दूसरे टाइप के वॉरियर्स भी हैं हमारे साथ आज ही। एपेक्स किडनी फाउंडेशन में कुछ लोग जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो फ्रंट लाइन पे थे लास्ट 2 साल कोविड में, और उन सबको मैं फेलिसिटेट करना चाहूंगा। सबसे पहले हमारी मेडिकल टीम के एक बहुत ही अहम सदस्य डॉक्टर दीपा, जो आज नहीं आ सके, पर डॉक्टर बिल्ला के साथ जो नेफ्रोलॉजी प्रैक्टिस में है चेंबूर में। विश इफ यू कैन से अ फ्यू वर्ड्स एंड देन इनवाइट देयर फैमिली। So Dr. Deepa is my colleague as well as a partner in practice. Unfortunately, she couldn't come here, but she shares a lot of our views about the foundation, and she actively participates in all the activities of the Apex Kidney Foundation. And somehow what we do in the foundation seems to be very infectious. So in the process, she seems to have infected her own family members. So we have today here her sister-in-law and her husband. Please come up. Please come up. And Kirti, and they have got actively involved in our foundation, and between them they are of course donors to the foundation. More importantly, the swab transplant project that we did, which again IIT was responsible for building the algorithm. Kiran and Preeti, both engineers, and they helped us actually create the software to help swab patients get suitable swabs. Other than that, they have taken it upon themselves to be a force and a voice to propagate the organ donation and organ pledging wherever they go. So I take this opportunity to felicitate both Preeti and Kiran as well as Deepa, who's not here. Thank you for all the good work. And एक बात तो सही है कि आपको किडनी पेशेंट और डॉक्टर बनने की जरूरत नहीं है वॉरियर बनने के लिए। इंजीनियर्स भी वॉरियर्स हैं, जैसे प्रोफेसर ने बताया, that we can be a part of this combined movement. Thank you very much. Mr. Chetan Shah, and I see my dear friend Dr. Harish walking in. We don't have a chair for Harish, so he has to stand. Late comers को punishment दिया जाना चाहिए। चेतन शाह, प्लीज कम फॉरवर्ड। चेतन ये भी एक बहुत ही जबरदस्त किडनी वॉरियर है और आखिरी 15 सालों से फाइट कर रहा है। चेतन के बारे में सिर्फ एक ही बात बोलना चाहूंगा कि जो तकलीफ उसने सही है, और जो भी व्यवसाय में, बिजनेस में जो भी पैसे कमाता है, उसका एक बहुत बड़ा अंश वो दूसरे पेशेंट्स को सपोर्ट करता है डायरेक्ट। इसको कोई फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, कोई एपेक्स किडनी फाउंडेशन की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक फोन कॉल काफी है। मेरे को खाली उनको फोन करना है कि ये पेशेंट को दवाई की जरूरत है, चेतन आप इसको दवाई फ्री में दे दीजिए 6 महीने के लिए, और वो काम हो जाता है। So Chetan has had 2 transplants. This is his second transplant, second innings, as somebody mentioned, and he's fittingly fine and helping more and more people fight this disease. Thank you, Chetan. And invite Vaishali to felicitate Chetan. Paresh has come. Thank you. As I was saying, background में बहुत लोग जो एपेक्स किडनी फाउंडेशन के लिए काम करते हैं, या उसके लिए भी ये हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है कि उनको फेलिसिटेट किया जाए। उसमें एक मेन फोर्स जो डॉक्टर दीपा के साथ हैं वो डॉक्टर पराग तिलवे।
Parag, please come forward. Nobody better than Srirang to talk about Parag. Yeah. So Parag works along I and Parag work together in Bombay Hospital, and also we are integral. Is an integral part and family of Apex Foundation. I get a lot to learn from Parag every day. And when I see him, I understand how I should be cool, calm, talk to patients in a very loving manner, talk to resident doctors and teach them in a loving manner. So this is what I learn from Parag each and every day. Parag has no timings. Yesterday he was saying my wife has left me mentally already. Because yesterday he was there till 10:30. Every day he is so punctual. He will be dot on time in the hospital. And then there is no, and so also our secretary also learned this from him. He is also on time. He doesn't mind staying late and very kind to patients. So such a behavior percolates in the system. And I give full credit to Parag for doing this and working so hard. Every patient loves him. And I can say that apart from my Apex family, my true family, and he is my younger brother. Thank you. While Srirang felicitates Parag, just two specific points about Parag. Parag leads our exchange fellowship program, जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी के साथ हम नेफ्रोलॉजिस्ट ट्रेन करते हैं. उनको 1 साल यहाँ ट्रेनिंग देते हैं और उसके बाद 6 weeks वी सेंड देम टू सिडनी. ये पूरा एक स्टूडेंट को ट्रेन करने में करीब हमको 10 लाख खर्चा होता है. बट वी आर कमिटेड कि इंडिया में सिर्फ 2500 किडनी डॉक्टर हैं. फॉर अ पॉपुलेशन ऑफ 1.4 billion वी हैव ओनली 2500 किडनी डॉक्टर्स. और जो भी हम कर सकें, कोई जिसको इंटरेस्ट है नेफ्रोलॉजी में उसको सीट नहीं मिली कोई कारण से, 1-2 मार्क कम हो गए, और अगर उसको इंटरेस्ट है और उसको ट्रेन होना है तो दे अप्रोच पराग, दे राइट एन ईमेल टू पराग एंड पराग टेक्स द इंटरव्यूज and then selects them, and every year we ensure that one student gets trained to this program. So Parag is instrumental for running our program. And secondly, जो आपने सुना लालबाग चा राजा और अपने पास जो पेशेंट थे लालबाग से, every week, twice in a week, Parag is there to see every patient physically. ये बहुत मुश्किल है हमारे लिए कि हम सब पेशेंट को मिल सकें रेगुलर टाइम टू टाइम, क्योंकि इतनी ज़्यादा ज़रूरत है नेफ्रोलॉजिस्ट की. But Parag makes it a point that despite being a charitable center and not getting any income from Lalbagh Charaja, he will go religiously twice a week and see every patient on dialysis. So thank you, Parag, for all your efforts. And Srirang, if you can felicitate Parag, this is just a small token of our appreciation for all the work that he has done. Rajesh? Thank you, Parag. And in the interest of time, I will now call all the Apex Kidney Foundation warriors who have been with us since our journey of 2008. Let's call Shrikant Khot. Shrikant has almost been labeled as a nephrologist now, because during the COVID period, हर पेशेंट को जिसको जरूरत थी डायलिसिस की, प्रोजेक्ट विक्ट्री का पूरा कोऑर्डिनेशन श्रीकांत ने किया है. और कभी कभी पेशेंट भूल जाते थे कि वो उनके नेफ्रोलॉजिस्ट भी हैं, श्रीकांत ही सब हैंडल कर लेता था. साथ में दूसरे वॉरियर रंजीता परब. रंजीता हमारे साथ जुड़ी हुई है एपेक्स किडनी फाउंडेशन से. श्रीकांत बद्दल अजून एक गोष्ट आहे. श्रीकांत BMC आणि आमच्याकडून दोघांकडून हे झाल्यामुळे आता तो अर्धा BMC, त्याला कोणी फोन केला की श्रीकांत खो तुमचा BMCचा माणूस म्हणून पण बोलतो आणि एपेक्सचा माणूस म्हणून, नेफ्रोलॉजिस्ट म्हणून पण बोलतो. The only thing is कि BMC is not paying his salary, so Ranjita has been with us at Apex Kidney Foundation since the last 10 years. She happens to be a transplant patient of Dr. Rajesh, and she took it up on herself that she wants to work
for a foundation which supports kidney patients. She herself is a kidney patient. She is a successful transplant patient for the last 8 years and doing extremely well. And she works full time with us for the foundation, doing all the designing work, etc. So thank you, Ranjita. Also, I would want to invite Mr. Prakash Shirodkar. His name was not there in the list, but that was a surprise. Prakash is the main force behind the entire Apex movement. He has been with us for last 14 years since Apex started. He's employee number 1 of Apex. We just took him out from Hinduja. He was at Hinduja Hospital working as in the lab. But I told Prakash that you are not designed for just working like a lab technician. You have many more things to do and many more things to contribute. And Prakash has been a part of all our academic activities. As I mentioned about Shrikant, ये जो हम लोग इंटरनेशनल नेफ्रोलॉजी कोर्स करते हैं, उसमें जो कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है हर नेफ्रोलॉजिस्ट, दुनिया के सारे नेफ्रोलॉजिस्ट के साथ कोऑर्डिनेशन is done by Prakash only. And most of the nephrologists all around the world also know that Prakash is a nephrologist. He is not an employee, he is not our relative. He is a doctor and he communicates with all of them and gets all these big doctors from all over the world. He runs our entire course. We don't hire any event management for our course. हम वो 15-20 लाख रुपए जो बचाते हैं इवेंट मैनेजमेंट से, वो हम यूज करते हैं पेशेंट्स को सपोर्ट करने के लिए. सो प्रकाश, अ बिग थैंक यू फॉर यू फॉर द एंटायर एफर्ट्स ड्यूरिंग द कोविड पीरियड. Of course, last but not the least, Dr. Ganesh Sanup. Quite a few of you must have met Ganesh. Ganesh has been with the Apex family for the last 10 to 12 years. He runs our swap registry with Dr. Billa at Chembur. तो ये सारे भारतवर्ष के पेशेंट जिसको भी स्वैप की ज़रूरत है, कहाँ ना कहाँ से गणेश सानप का ईमेल एड्रेस ढूंढ लेते हैं और वो डायरेक्ट गणेश को अप्रोच करते हैं. They don't even know that he is not a nephrologist. He again communicates with the patients as if he is a nephrologist, and his knowledge of nephrology is probably better than all of us put together. Ganesh is instrumental in helping so many patients with the swap registry and doing amazing work at our Chembur centers along with Vishwanath and Deepa. Yeah, Vish? There are another 2 people. Pratibha, who is... I'm going to call them. Acha, okay. I thought you... है नाम है मेरे पास. मोस्ट इम्पॉर्टेंट पर्सन इज, जब मेरे को कोई पेशेंट को हेल्प करना पड़ता है तो भाई वो चेक कौन बनाएगा, अपने फाउंडेशन के अकाउंट में पैसा है कि नहीं और किसी से पैसा लेना है कि नहीं, तो उसके लिए प्रतिभा को आगे बुलाऊंगा. प्रतिभा अगेन कोऑर्डिनेट्स फॉर ऑल आवर एपेक्स फाउंडेशंस फाइनेंशियल एक्टिविटीज. हमारे पास वो FCRA लाइसेंस भी है जिससे हमको फॉरेन फंड्स भी मिल सकते हैं और उसका पूरा जो कंप्लायंस है, उसका जो भी रिक्वायरमेंट्स है, वो पूरा प्रतिभा देखती है. In our practice, we don't have the time to do all this, but Pratibha does that for us, and she has been doing that selflessly for the last 12 years. So thank you, Pratibha. And Shrikant's better half, Rupali. I think she's standing there in the last sort of row. But she has been a big support for the challenges that we faced during the COVID period. Rupali coordinates for all our patients who require dialysis when they turn positive, negative. और घर में ये सब कोविड और प्रोजेक्ट विक्ट्री की चर्चा होती है, मुझे लगता है. ज़्यादा कुछ प्यार की बातें वगैरह नहीं कर रहा होगा श्रीकांत. दिन रात खाली किसको कहाँ डायलिसिस पे भेजना है, कहाँ भेजना है, कैसे भेजना है. So a big thank you to all of you. Please all of you come forward. I would request Sheetal can come ahead, Vishwanath, you also, and Srirang and Rajesh, of course, to felicitate all of them. Please come in the front. यहाँ आ जाओ, यहाँ आगे आगे. As always, he wants to stay behind the... A big round of applause for our entire team. And without all of them, this would not have been possible. One person whom we are coordinating the entire activity of the, while the photo session continues, I will continue speaking. कि कभी भी कोई पेशेंट को ज़रूरत हो तो एक कोऑर्डिनेटर का होना बहुत ज़रूरी है. और
वो कोऑर्डिनेशन करने के लिए हमारे पास है नीलेश शेडगे। नीलेश वहाँ साइड में खड़े रहो, मत हो जाओ, आगे आ जाओ। और Nilesh has also contributed tremendously in the last so many years. He's been our AKF coordinator since day one. मेरे से बहुत डांट खाता है वो, but the amount of work that he does, the amount of camps, support activities, kidney donation camps, सब जगह खुद जाता है, सबसे बात करता है, प्रोग्राम पूरा अरेंज करता है, फिर हमको आके बताता है कि सर आपको खाली ये चेक साइन करना है। So amazing work for the entire team, and please come, Ranjita. Vaishali, you also. Great. I hope I have not missed out anybody, but by any chance, if I missed out anybody, I'm going to call Atul bhai last. Atul bhai, bhulyo nathi tamne. Praveen, please come. प्रवीण घाग हैंडल्स आर फार्मेसी। और ये सारा जो जब संजय काका ने बताया कि हमको मशीन देना है, तो उसको पूरा कोऑर्डिनेशन कैसे करना है, मशीन किसको चेक जाना चाहिए, क्या जाना चाहिए, थ्रू फार्मेसी जाना चाहिए कि नहीं, वो पूरा प्रवीण कोऑर्डिनेट करता है। सो बिग थैंक यू टू प्रवीण ऑल्सो। या हेमा विल फेलिसिटेट, शी हैड ऑलरेडी कम अप ऑन द पोडियम। अतुल भाई प्लीज कम। कांट सी यू। चेतन બહાર ગયા? અચ્છા અજયભાઈ તમે આવી જાઓ। એમને અતુલભાઈને જ્યારે બી કંઈ કામે લગાડીએ ને એટલે અહીંયા ત્યાં ભાગવા લાગે। અચ્છા આવે છે, ઓકે, થેન્ક યુ ઓલ, થેન્ક યુ। In the interest of time, let's play a couple of videos if time permits. Are all of you hungry or you're okay to go for another 10 minutes? We have a few people on the Zoom. Unfortunately, you couldn't make it. So let's hear from a few of those well-wishers of Apex Kidney Foundation. And then we'll have Indranil give the vote of thanks. Can you start the videos, please? Yeah. Hi, This is everybody. our good friend, My Dr. name Ravi is Mehta. Dr. Ravindra Mehta, and I am the Chief of Apollo Bangalore Advanced Pulmonary Services and also critical care doctor. It is my pleasure to say a few words on this lovely occasion of felicitation of kidney warriors by the Apex Kidney Foundation. Apex Kidney Foundation is something I have seen over the last decade and a half, and I've seen its progress over the years, championed by nephrologists who in the earlier years could have taken a pathway of only being regular doctors, but who scaled the heights, imagined beyond regular thinking, and became entrepreneurs. What have they done? They have put a product which is just so amazing that to describe it will take the whole day, but we will try and do justice in the next couple of minutes. They started as trying to put a product of dialysis across the landscape of the city, state, and country. But then the typical doctor mind who sees the distress and the pain of patients also pitched in, and they founded Apex Kidney Foundation. This foundation has surpassed anybody's expectations as to its penetration and what can be done to actually serve society as a whole and not only do their job as nephrologists. They have transgressed every area. If you look at their track record, it encompasses end-to-end 360-degree service to society. They have taken education into context in an unprecedented fashion. Not only have they trained doctors, they took the education to international standards, have organized education sessions and review courses, and are also trained dialysis technicians, because you require to have the whole gamut of the field covered when you try to actually leave an imprint in society. Moreover, their charity care, their quality care, their ability to help patients across the board, facilitate transplants, and go into unique process thinking, such as the swap registry and more they have also pioneered, is indeed a landmark performance in the field and indeed can only be lauded with the highest appreciation.
It doesn't end there. All organizations collapsed or took a backseat in COVID. These gentlemen, through their foundation, have put a unique process which led to a great service to mankind. When everybody was shunning these patients with renal failure who required dialysis, they set up a system in the city which could allow them to get expedited dialysis at the right places and give solace not only to these patients who are running helter-skelter, but also to the system, the BMC, who greatly appreciated their efforts and overall justified both ethically, morally, and pandemic-oriented the highest level of care. In short, this is just a few illustrations of what they have done. They have left an imprint which few have done. Being a provider in the field and seeing how healthcare suffers, and especially dialysis patients, it is both my pride and at the same time my greatest respect which I can convey to these people to have set up such a foundation which has served people end to end in a manner not shown before. I repeat, because I think it is to be said not once but 1,000 times, and we hope that the powers that be give them the energy to continue this amazing work for the good of the field, for the good of patients, for the good of training, for the good of education, and to make everybody see that such inspirational stories are possible in this time and age, and leave an imprint overall for many to follow and many to see. Thank you. That Ravi was a part of the entire Bangalore task force for COVID, and he pioneered the entire process of saving lives in Bangalore. I was dictated for chronic. This is Mr. Jayendran, our chartered accountant for Apex Kidney Care and Apex Kidney Foundation, who also has a long connection with us. Let's hear from Mr. Jayendran. My name is N. Jensen. I am a practicing chartered accountant by profession. I was dictated for chronic kidney disorder around 10 years back, and that almost shattered my life. Not knowing what to do, I felt lost and needed a solution. That's when I met my nephrologist and my doctor for life, Dr. Vishwanath Billa, trustee and part of the team at Apex Kidney Foundation. He systematically addressed each of my concerns and returned to my query: whether do I have to leave my practice? Will I have to lead a sedated life? He said there is a doctor who operates almost 8 to 10 hours a day, a soccer player, who all are transplant patients. That gave me the real vigor and confidence to reboot, as my practice was my passion and I had not exhausted my passion. We were guided through the process of medication, limited dialysis, and finally a transplant. The post-transplant regime was actually a reboot, because after that, me and my wife ran for Apex Foundation, and the 2 times that I ran, I was running for the cause that transplant does not stop you, does not put you into a shell. You're free to do all that you want to do, so long as you take precautions. AKF has been doing a lot for the kidney-related ailments, supporting patients, providing free dialysis, doing the swab transplant registry, conducting regular nephrology conferences, bring about awareness for kidney-related disorder, and solutions around it. I wish Apex Kidney Foundation the very best and will continue to support it in whatever manner possible. Thank you. Thank you. While we load the next video, somebody who has not been present but has been a big support for our foundation, Mr. Dilip Bhai Lucky and the entire Lucky Foundation. Dilip Bhai himself has suffered from kidney disease and he's had a transplant, and Haresh is very well aware, and most of the people here know Dilip Bhai. He's a big philanthropist. Whenever I require any support, just a phone call away. Any patient needs help, guidance. Sometimes he even does my work of being the transplant doctor and convinces them that transplant is the best option for them. So he's not here because his grandson is having a Mundan ceremony today. So otherwise you would have heard from Dilip Bhai also. Thank you. Hello, hello to all. My name is Swanand Kirkire, or I'm making this video to extend my
warm wishes and my best wishes to Apex Kidney Foundation, my friend Dr. Jatin Kothari, and all the team of the Apex Kidney Foundation, because they are doing some amazing work in the area of research and prevention of kidney diseases for so many years. And me being his patient, I really know what all goes into it, and what all hard work goes into it, what all commitment goes into it. The passion which these people are working is incredible. So I extend my warm wishes. I wanted to be there. Every year I try to be there, but this time unfortunately I'm not in the country. So next time I'll be joining you guys there, and all my best wishes. Thank you so much. Yeah, one warrior has been left behind. Paresh Bhai, please come. Paresh Bhai has been looking after all our foundation work for so many years, and thank you very much. Thank you. यही ले लूं? Thank you. Hello everybody, Namaskar, this is Murli Sharma, and just want to wish Dr. Kothari and his Apex Kidney Foundation all the very best in everything that they're doing in supporting and educating people in various kidney issues and supporting people who are in real need. And my apologies, Dr. Kothari, not being able to attend the function on the 21st. Sincere apologies, because I'm shooting and I'm out of town. But all my best wishes, and keep up this great work, and you be well, Doctor. Cheers. All the very best. Thank you. Last but not the least, I'm sure everybody is hungry, but let me invite Mr. Indranil Roy Chaudhary. He's a new member of the Apex family. He's our COO. And Hitesh Bhai is just walking up to say a few words, but Indranil will offer the vote of thanks after Hitesh Bhai. Thank you. Sorry to be coming in between, but next time never ask me to speak in the beginning. I'm much more motivated in the end. It's been an extremely energizing and motivating morning to hear from Shibani to Yogesh, all the stories. It reminded me of that movie Anand. Okay, and you see something, Rajesh Khanna in a movie, and you see live cases here, fighting with that same spirit. So it's been extremely energizing, and it triggers an impulse, and out of that impulse, I am happy to announce that a 21 lakh donation towards HSE. I am an executor, I and my wife are an executor of someone's will, one of my uncle's will, and I'll be donating out of that. Thank you. I'm so happy and so motivated to listen to everyone. Thank you. Thank you, Hitesh Bhai. We need much more. So not only in cash or kind, but your guidance, your support AKC is what we seek. Never short of funds, that I can assure you, whether it's a Mr. Lucky or whether it's me or whether it's anybody, and whether it's the warriors sitting here. You know, you have people who are with you in this movement, and it's only going to see success. Thank you very much. Not that I want too many kidney patients in the world, but for whatever there is, you are doing a wonderful job. Thank you. Thank you. Yes, please. Can you show the Lal Bagh video, please? Yeah. Mr. Salvi sent out a video. So Mr. Salvi is the in charge of the Lal Bagh Raja Dialysis Center. I think Srirang can talk a little bit more about him, since he's been associated with Srirang for so many years. लालबाग मंडल के सेक्रेटरी है। तो एक मैं इधर कहना चाहता हूँ कि जब बोला जाता है कि बहुत पैसा मिलता है भगवान को, उसका क्या करते हैं क्या नहीं क्या मालूम, तो हमको मुझे और डॉक्टर पराग को फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन जो बोलते हैं वो है कि हमने अभी तक बहुत सारी संस्थाएं देखी है, गवर्नमेंट देखा है,
बाकी चैरिटेबल, बहुत सारे चैरिटेबल ट्रस्ट देखे हैं। लालबाग में ऐसा है कि पेशेंट के लिए जो भी मांगा जाए वो इमीडिएटली रिलीज हो जाता है हमारे ट्रांसप्लांट डायलिसिस पेशेंट्स के। तो दिस इज़ माई व्हाट आई हैव सीन माई सेल्फ। तो हमको बहुत गर्व होता है कि हम लालबाग ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं और हम थ्रू द मनी विच इज़ गॉड्स मनी गिवन टू गॉड with strong beliefs that this money is going to alleviate suffering, उसमें हम मदद कर सकते हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो ये मिस्टर सुधीर सालवी जो ये ट्रस्ट के सेक्रेटरी है और मेन वही देखते हैं, वो बात करें। थँक्यू श्री। 22 वर्ष 89. मी मानस सचिव सुधीर साळवी, लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळामार्फत अनेक सामाजिक उपक्रम चालवले जातात। लालबागच्या राजाच्या दानपेटीमध्ये जो निधी जमा होतो, लालबागच्या राजाच्या चरणी ज्या सोन्या चांदीच्या वस्तू अर्पण होतात त्याचा लिलाव केला जातो, त्यामार्फत जो निधी जमा होतो आणि असंख्य भाविक, असंख्य हितचिंतक लालबागच्या राजाच्या चरणी जो निधी देतात त्याचा देखील सामाजिक उपयोग केला जातो। असाच एक 11 वर्षापूर्वी एक सामाजिक बांधिलकीचा वसा मंडळाने जपला आणि लालबागचा राजा डायलिसिस सेंटर सुरू केले आणि आज तब्बल या लालबागचा राजा डायलिसिस सेंटरला 11 वर्ष पूर्ण होत आहेत आणि ह्या 11 वर्षामध्ये हे लालबागचा राजा डायलिसिस सेंटर अतिशय अविरतपणे आम्ही चालवलं। कोविडच्या कालखंडात देखील या संपूर्ण 2 वर्षामध्ये आमच्या स्टाफ मार्फत संपूर्ण व्यवस्थितपणे हे डायलिसिस सेंटर अविरतपणे अव्याहतपने सुरू राहिलं। या 11 वर्षाच्या प्रवासामध्ये कधी 11 वर्ष निघून गेली कळलीच नाही। तब्बल या 11 वर्षामध्ये जवळजवळ 2,66,000 इतके डायलिसिस त्या ठिकाणी केले गेले आणि हा एक 11 वर्षाचा सामाजिक बांधिलकीचा वसा या मंडळाने अविरतपणे जपला आणि या संपूर्ण प्रवासामध्ये आमच्या एपेक्स किडनी फाउंडेशन हे आमच्या सोबत होते। डॉक्टर बिच्चू आणि त्यांची टीम असेल, आमचे मित्र सहकारी शिरोडकर असतील, त्यांचा संपूर्ण कर्मचारी वर्ग असेल, या लोकांनी जे 11 वर्ष सातत्याने आमच्या सोबत हे काम करत राहिले आणि त्याच्यामुळे हा सामाजिक बांधिलकीचा वसा आम्ही पूर्णपणे जपला। एपेक्स सारखे संस्था आमच्या सोबत होती म्हणूनच आम्ही हे संपूर्ण आतापर्यंत जे सामाजिक बांधिलकीचं ओढत आहे ते अतिशय चांगल्या पद्धतीने जपू शकलो। भविष्य काळात देखील हे लालबागचं राहायचं डायलिसिस सेंटर रुग्णांसाठी असंच अविरतपणे चालू आहे याची मंडळामार्फत ग्वाही देतो आणि एपेक्स किडनी फाउंडेशनच्या भविष्यातल्या संपूर्ण उपक्रमांसाठी सामाजिक बांधिलकी ते देखील मोठ्या प्रमाणामध्ये जपत आहेत। मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांची डायलिसिस सेंटर सुरू आहे या मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, हिंदुस्थानामध्ये। आज जो हा डायलिसिसचा एक जटिल प्रश्न उभा आहे त्याच्यामध्ये एक सामाजिक योगदान मोठ्या प्रमाणामध्ये एपेक्स किडनी फाउंडेशन आणि आमचे बिच्चू सर देत आहेत। त्यांच्या या अनमोल संपूर्ण कार्याला लालबागचा राजा सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळामार्फत शुभेच्छा। इंद्रडी। Thank you. You know, someone has rightly said, God never lives in temple or mosque or church. God is among all of us. When you see the kidney warriors and you see all those who are fighting for this noble cause, you understand that how true is that saying that God lives among human beings itself. My first word of thanks is all to the warriors, the patients specifically, who are fighting and who are inspiring all of us in this battle against kidney disease. I extend my sincere vote of thanks to all the contributors and patrons of Apex Kidney Foundation who have been helping relentlessly and selflessly to continue this fight. I also extend my sincere thanks and gratitude to all the members, to the donors of Apex Kidney Foundation, without whom this would never have been possible. I would not be doing justice if I would not be reading out the names, some of whom are present here. Some of them
have not been able to make it for the program. However, their contribution, their sincere wishes, their best wishes, and their guidance is always there with us. So among the supporters of Apex Kidney Foundation, it's my proud privilege to thank Shri Iqbal Singh Chahal, Municipal Commissioner of Mumbai Municipal Corporation, Dr. Mangla Gumare, Dr. Daksha Shah, Dr. Sanjay Prasad from MCGM, Dr. Shailesh Mohite, Dean Cooper Hospital, Dr. Neelam Redkar, HOD Medicine Department, Cooper Hospital, Dr. Kalpana Mehta, Dean Nayar Hospital, Dr. Aditya Daftari, Mr. Sanket Javeri, Mr. Atul Nadichania, Mr. Ajay Sangvi, Mr. Jinesh Patel, Mr. Ajay Bhai Sangvi, Mr. Suresh Agarwal, Mr. Ravi Goenka, Advocate Janak Bhatia, who helps us in different legal matters for Apex Kidney Foundation, Mr. Harsh Mehta, Mr. Bharat Pathak, Mr. Sanjay Kothari, Mr. Sirish Mehta, Dr. Ravi Mehta and Dr. Ravi Thadani, who helps us and guide us in organizing the board review course of Apex Kidney Foundation. There are a number of individual donors who have been helping Apex Kidney Foundation over the years. Mr. Rajan Mehta, Mr. Kevin Parikh, Ms. Swati Mehta, Mr. Shankar Parikh, Mr. Pradeep Gupta, Mahendra Brothers, Mr. Manish Mehta, late Mr. Arun Bongirwar, Ms. Daksha Mehta, Mr. Rajesh Chandiramani, Mr. Deepak Alva, Mr. Sirish Bhai Modi, Ms. Neelam Mehta, Ms. Kinnari Mehta and sisters, Mr. Suresh Agarwal, Ms. Neeta Modi, Ms. Jigna Agarwal, Mr. Parinay Chandorkar, Mr. Nikunj Agarwal, Ms. Manjula Iyer, Sarita Alvarez from Fine Organics Limited, Sunil Alvarez, Mr. Vicky Jain, Nimish Shah, Mr. Nilesh Shah, Dr. Haresh Mehta, Mr. Jinesh Patel, Vamesh Choatia from Tata Capital, Mr. Kalpesh Shah, Dr. Deepa Dwarkadas, Mr. Mehul Mehta, Mrs. Nawaz Singhania from Raymond's Group, Mr. Milan Parikh, Mr. Ajay Mehta, Mr. Arvind Suri, Ms. Ashish Kacholia, Mr. Dheeraj Mehta, Sai Chuvakula, Pradeep Gupta, Piyush Mehchandani, Dinesh Mehta, Nahi Jatia, Mr. K.R. Sridhar, Mr. Shudhir Mehta, Mr. Manoj Mehta, Vitul Vichu, Mr. Hoshang Irani, Mr. Harish Chaitanya, Hemlin Chemicals, Dr. Jatin Mahentalal Mehta, and Mrs. Shivani Puri, Dr. Chirag Parikh, and Ms. Madhuri Agarwal. We would also like to extend our sincere thanks to the industry donors who have been helping Apex Kidney Foundation to conduct and to perform this noble cause. MCure Industries, Nirav Mehta from JB Chemicals, Steadfast, Astellas, RPG Life Sciences, Biocon Biologics, Panacea Biotech Pharma Limited, Dr. Reddy's Laboratory, Steadfast Medishield, and Jupiter Dichem Private Limited. And before we end, two announcements. One is we have given all of you as a part of Memento this plant, because plant is the symbol of life, and that is why we selected it. And we would be, while you will have your lunch, we will be putting it in the box so that it's easier for you to carry back home, so that you can nurture it every day, and this will give all of us the confidence to continue this battle. And thank you very much. My heartfelt thanks to the trustees of Apex Kidney Foundation, to the entire team of Apex Kidney Foundation, and also to the staff of this hotel. Ismail Bhai is there for hosting us. Thank you so much. Please join us for lunch. Lunch is served outside. Thank you. Also, the entire team sitting here on the right-hand side, make sure that you have lunch with us. Thank you.